एवं देशक मानव संबल आदित्य बिरला ग्रुप उपस्थित अच्छा आज मंच में श्री स्वप्नेन्दु महांती महोदय मुख्य फिनटेक अधिकारी मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर उपस्थित अच्छा श्री सच्चिदानंद पंडा रीता एंड रिचर्ड्स अटेंशन अध्यक्ष प्राध्यक्षप एवं सान डिएगो अनुरोध करने चाहबू जोरदार करताली बजे निजर अभिवादन जनइबू निजर भावना को व्यक्त करूँ निजर भल पाइबा सम्मान को बांटबू अनुरोध करने चाहबू डॉक्टर सुब्रत बागची महोदय को महोदय आज अधिवेशन में निजर अभिभाषण को रखिए प्रथमे तांको पाखरु सुनिबा। Is this necessary? जय जगन्नाथ। विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन शेष दिवस रे आपण मान को स्वागत जनाऊँ। 3 दिन सम्मेलनी आज संध्यारे उद्यापित हवा पूर्वर आम एकत्रित होइछु 2036 ओडिशार परिकल्पना करिया पे। भाषा मनीषर भावना को व्यक्त करे, भाषा ताकू जीवन अर्थ बुझाए, भाषा तार अंतर दुख जातना हताशा को व्यक्त करे, भाषा मनीष को स्वप्न देखाए। यही परिप्रेक्षी रे आज आपण मान सम्मुख रे ठिया होई मोर पिला दिनर ओडिशा कथा मने पड़ुछ। किशोर जीवन रो अनेक साहित्य कृति बहु गद्य कविता मध्यरु 2टी कवितार कियदंश आपण मान को सुनाइबा को चाहिबी। प्रथम कविताटी हैला बहु सम्मानित ज्ञानपीठ पुरस्कार रे मंडित कवि सच्चिदानंद राउतरायंकर अर्क क्षेत्र कोणार्क मंदिर जहाँ चिरदिन ओडिया अस्मितार प्रतीक ताकू देखी कवि साधारण मनीषर अकुहा दुख वेदना को आम सामने तोली धरिछंती। कविंक भाषा रे तुमे देखिअछ शिलारे तार तो रम्य कलार रूप मु देखिछि तही कोटि कंकाल भग्न बुकुर स्तूप सेठी अछि काली फूलर फसल सपनर नील ढेउ हीरार सूर्य पाहांती प्रहरे प्रणामता नेउ नेउ कही जाए धरा काने जीवनर जेते क्षत अपमान गाई नाई किए गाने रम्य कलार लीला किछि तो कहिनी मनीषर कथा कहिबार जहा थिला। से किशोर बयसर आउ गोटे कविता हमको प्रभावित करी तोलिथिला पंडित गोदावरी महापात्र कविता। दुर्गम गिरी दुर्ग प्राचीर जीर्ण दुआरे बसी डाके तांत्रिक मंत्र साधने जाग्रत पुरवासी पृथ्वीदारी बारबाटी मोड़ा उठ उठ चंचल खोरदार सत सरदार सिर कर उन्नततर उठ कंकाल छिड़ु श्रृंखल जाग दुर्बल आजी उठुगत गौरव मृत गौरव राजी बेल नाही कंकाल टेक चंचल मथा बिदारी उपल निर्मल तब पिंजरु उठु व्यथा बाजी उठु बारे मरण विजयी बंशी से बुकु तले धूर्जटी जटा जुट कंपाई जौवन कुतूहले उठ कंकाल उठ दुर्बल जाग कंकाल आजी उठुगत गौरव मृत गौरव राजी। गोदावरी शंकर जन्म 1898 मसीह तार 18 वर्ष पर 1916 मसीह जन्म सच्चिदानंद राउतरायंकर प्राय गोटे पीढ़ीर 2 जन कवि 2 जनकर 2टी कालजयी कवितार कंकाल शब्दटी व्यवहृत होइछ। कंकाल शब्दटी व्यवहृत होइछ। आज 2024 मंच रे ठिया ओडिशा आज जदि कवि आजिर ओडिशा को संबोधित करिथान्ते सेथिरे आमको चेताई देबा भली अनेक किछि हुए तो कहि थान्ते किंतु कंकाल शब्दटी बोध व्यवहार करि न थान्ते। आज ओडिशा कंकाल सार नुहे जो चाहिए आखिरे शैशवर छवि यौवनर छवि आत्मविश्वास और उद्दीपनार छवि किंतु व्यक्तिगत आत्मविश्वास और उद्दीपनार समाज जाति देशर सामग्रिक अभिलाष वर्णित हुए ना से गोटे जाति को सामग्रिक भाव स्वप्न देखा हुए। आज जदि पंडित गोदावरी महापात्र सच्चिदानंद राउतराय आम गहन थाते ताहले आमको निश्चय कही था तुम्हें स्वप्न देख तुम स्वप्न देखार बेल आसी जाइए। विगत इतिहास दुख
कष्ट जातनार श्रृंखल तुम्हें बंधा होइना। आज जदि कवि आम सांगरे थांते आज मंच को उज्ज्वल करिथिबा तीनोटी प्रतिभा को प्राण भरी आशीर्वाद दे कही थांते तुम पई जगत चुंबी हो ओडिशार आगामी पीढ़ी। बंधुगण आसंतु स्वागत करवा सर्वप्रथमे डॉक्टर संतृप्त मिश्र को। साधारण मध्यवित्त ओडिया मध्यवित्त ओडिया स्कूल रे पाठ पढ़ी कटक बोर्ड स्कूल ओडिया माध्यम रे पढ़िबा परे एही माटीर योग्य संतान जहाँकर कथा आंतर्जातिक शिल्पपति ठारू आरंभ करी साधारण मनीष को सबुबले अनुप्राणित करी आछि। मानव संबल क्षेत्र में तांकर अवदान प्रत्येक मंचरे स्वीकृत। तीनोटी उपाधि तीनोटी डॉक्टर उपाधि भूषित डॉक्टर मिश्र विभिन्न संस्थार व्यवस्थापक रही। अधुना ओडिशा सरकारंकर एकाम्र क्षेत्र परियोजना रे उपदेष्टा कमिटीर अध्यक्षता करुछन्ति। आदित्य बिरला गोष्ठीर शीर्ष स्थान रे 28 वर्ष कार्य करिवा परे स्वेच्छाकृत अवसर ग्रहण करिछन्ति डॉक्टर संतृप्त मिश्र। आम गहन अच्छा श्रीजुक्त स्वप्नेन्दु महांती बालेश्वर पिला केंद्रीय विद्यालय रे पाठ सारी फकीर मोहन कॉलेज रे अध्ययन आउतापरे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आज सिंगापुर सरकार मॉनिटरी अथॉरिटी चीफ फिनटेक ऑफिसर तांको उपदेश रे सिंगापुर सरकार अर्थनैतिक नीति निर्धारित होता है। विश्वविख्यात सिटी ग्रुप रे दीर्घ 18 वर्ष कार्य करिवा परे सिंगापुर सरकार सहित कार्यरत 5टी आंतर्जातिक पेटेंट हासिल करिथिबा श्री महांती 5टी आंतर्जातिक पेटेंट हासिल करिथिबा श्री महांती आंतर्जातिक वित्त संस्था इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड परी बहु उपदेष्टा कमिटी रे वर्तमान सदस्य। स्वप्नरु स्वप्नेन्दु साथ अच्छी डॉक्टर सचिन पंडा जी मध्य ओडिशार एक मध्यवित्त परिवार पिला। गोटे नुह दुईटी नुह 9टी सरकारी स्कूल रे पाठ पढ़ी। तारी भितर रही केन्दुझर धनुर्जय नारायण हाई स्कूल जार पूर्वतन छात्र हिसाब रे मु निजको गर्वित मन करुछि। 9टी सरकारी स्कूल रे पाठ पढ़िबा परे ओडिशा कृषि विद्यालय कृषि विज्ञान रे अध्ययन आरंभ। एबे विश्वविख्यात सैक्स इंस्टीट्यूट रो अतिरिक्त प्रोफेसर सिकार्डियन रिदम उपरे तांकर रचना एवं आलेख्य विश्वचर्चित। ओयूट रे अध्यापन कला बेले गोटे नुह दुईटी नुह 7टी स्वर्ण पदक विजय करथिले। मनुष्य एवं पशु मानक देहरे थिबा मेलस्मोनिन प्रोटीन को नहीं गवेषणा करिथिबा डॉक्टर पंडांकर कृति मधुमेह ठारू आरंभ करी कैंसर पर्यंत विभिन्न क्षेत्र में विशेष भाव में वैज्ञानिक मान को प्रभावित करिछि। एवं सर्वशेष रही आगामी कालीर उदीयमान सूर्य समीक्षा जड़े किशोरी जे किशोरी आखिरे थिबा आगत ओडिशार स्वप्न आपण मान सांगे आपण मान सम्मुख में तोली धरिबे। आपण समस्त को नमस्कार एवं ओडिशावासी तरफ स्वागत जनाऊँगी। बंधुगण प्रथमे आमे डॉक्टर संतृप्त मिश्र गभीर चिंता एवं उत्कर्ष रे भरा अभिभाषण शुणा। प्रत्येकटी अभिभाषण पर आमे निजे थरे भाविबा जे विजन ओडिशा 2036 पाई मु किपरि भाव में प्रतिश्रुतिबद्ध हेबी। डॉक्टर संतृप्त मिश्र। जय जगन्नाथ एवं वंदे उत्कल जननी। आजिर ए समारोह अध्यक्ष बहु प्रतिभाशाली एवं आदरणीय श्रीजुक्त सुब्रत बागची, मंचासीन मोर दुई जन सहवक्ता स्वप्नेन्दु महांती बाबू एवं सच्चिदानंद पंडा बाबू, जो माने कि विभिन्न क्षेत्र में ख्याति अर्जन करिसेंती ओडिशारु जाई जेभली सुब्रत बाबू कहले। आपण मानक भली ओडिशा प्रेमी ओडिया भाषा प्रेमी जो माने 2036 स्वप्न एकाठी देखा चाहूँगी आपण मानक समस्त को नमस्कार। मु निजको भारी धन्य मन करुछि जे आज उत्सव रे आपण माने मते निमंत्रण करिसेंती।
मो निजर कृतज्ञता जनाऊँगी ओडिशा सरकार को ये जो उत्सवर मुख्य प्राइम मूवर मार्गदर्शक ओडिशा सरकार को श्री बालकृष्णन जी सुजाता राउत पांडियन जी तांकर मु समस्त कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची जे मते आपण माने एठी डाकिले। मोर विश्वास जे आम भितर सुप्त निष्क्रिय जो स्नेह रही ओडिशा भाषा पाई जन्म माटी पाई मातृभूमि मातृभाषा पाई ताकू जागृत करिबा पाई पुनः प्रज्वलित करिबा पाई आमे माने विगत 2-3 दिन रे निश्चित भाव रे स्वभाव कवि गंगाधरन को स्मरण करिछे। मु अभिनंदन एवं अभिवादन देवा को चाहिए ओडिशा सरकार को आमर लोकप्रिय जननायक एवं ओडिशार मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक जी को एवं आपण मानक समस्त को जे प्रथम विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन आज ये होची 12 वर्ष आगु 2036 पहुँचवा पूर्व मोर मन पड़े जे प्रथम जातीय ओडिया भाषा सम्मेलन डिसेम्बर 30-31 1903 मसीह कटक रे हेइथिला। आज तार 120 वर्ष पर आम कार्यक्रम करुचे एठारो अधिक ऐतिहासिक कौन हो पार किंतु मु ए विषय आगु कहवा आगु ये सम्मेलन को देखा पर एवं ओडिशार जो प्रगति है अनेक वर्ष है देखा बेले मो मन रे गोटे व्यक्तिगत चिंता आसिला। 1978 मसीह मो मैट्रिकुलेशन परीक्षा दूसरी बोर्ड स्कूल रू बोर्ड परीक्षा होता डिफरेंट फैसेट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ either by preparing for the opportunities in the future or by preparing ourselves to address the problems that are there before us or that could plague us in the future. The origin of thought leadership as an expression is attributed to different people. First time in 1876, Odisha linguistic province हमारा 50 वर्ष आगुरु राल्फ वाल्डो एमरसन को जने डिस्क्राइब करथिले आपण माने जानथिबे राल्फ वाल्डो एमरसन जने बड़ फिलोसोफर थिले तांको डिस्क्राइब करी के कहिथिले ही इज गेटिंग इनटू इयर्स माने से वृद्ध होचंती बट मैनिफेस्ट टुडे एज ही डिड 50 half a century years ago the wizard power of a thought leader. This was the first time in 1876 the expression thought leader was used. Later on in 1914 Joel Kuzman जे हार्वर्ड बिजनेस रिव्यूर एडिटर थिले एवं सब्सिक्वेंटली स्ट्रैटेजी एवं बिजनेस मैगजीन बनई थिले सी शब्द यूज 1914 करथिले एवं तापरे चलीछि। टू मी थॉट लीडरशिप इज अ कैपेसिटी इट इज अ कॉम्पिटेंस of an individual or an institution or a firm or even of a state like Odisha to address societal challenges or human challenges. The capacity has depth, it is prolific, it is authentic, it is honed over a long period of time and becomes a part of the profile of the possessor as an inalienable part of what can be done. It can be compiled as a content from research, जेमिति सच्चिदानंद बाबू करचंती. Thought leadership can from framing the right question. आपण मानकर मने थिबो न्यूटन प्रश्न पचारि थिले जोटा अन्य माने पचारि नथिले जे एप्पल गळी पड़ले तळकु काई जाउची उपरु काई जाउ नाही. तेणु many times thought leadership comes from asking right questions, uncomfortable questions, odd questions, hotcake questions, unusual questions and questions that other people do not think about. आपण गोटे इंटरेस्टिंग स्टोरी कहबी. डिस्नीलैंड रो फाउंडर थिले वर्ल्ड डिस्नी जतले देह खराब थिला तांकर से हॉस्पिटल में पड़ी थिले तांकु जने सांबादिक देखा करबा को जाइथिले. सेतबेले वर्ल्ड डिस्नी मैजिक किंगडम बोली गोटे बनैबा को चेष्टा करथिले डिस्नीलैंड रे. से रिपोर्टर जतले तांकु भेटिबा को गले वर्ल्ड डिस्नी को स्वास्थ्य एते खराब थिला एवं एते क्षीण भयस से कथा कहते शब्द बाहर नाला जे रिपोर्टर हॉस्पिटल बेड रे कड़े शोई पड़े शुणापी जे से कौन कहते. Many years later the magic kingdom was created and somebody visited the magic kingdom with the reporter and made the remark, oh what a pity he did not live to see this. माने किते दुखर कथा जे बंची रहिले एटा देखिबा पई.
But the reporter replied to him, he saw it. That is why it is there. That means that thought leadership is about vivid imagination. ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ कि 2036 रे 40 रे 50 रे 3000 रे कौन ହେଇପାରିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତରେ ପୃଥିବୀରେ. It is a thought capital. It is an opportunity in the area of ideas. Thought leadership can be of many kinds. It can be eternal, like ଯେଭଳି ଆମ ମାନଙ୍କ scripture ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, भगवद गीता रे ଲେଖା ହେଇଛି ବା ଅନ୍ୟ scripture ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବା medieval ସମୟରେ ଯେମିତି Thomas Hobbes କହିଥିଲେ ଯେ until philosophers become kings and kings become philosophers, the problems of the world will not be solved. So therefore, thought leadership comes out of reflection, research, idea exchanges. एभली जो प्लेटफॉर्म है ए विषय आमर तर्क वितर्क आलोचना ए सबरु थॉट लीडरशिप आसी पारे. टाइमलेस थॉट लीडरशिप अच्छी और नुआ थॉट लीडरशिप अच्छी. आपण माने देखुचंती क्वांटम कंप्यूटिंग, ड्राइवरलेस कार, द न्यूरल लिंक, ऑल काइंड्स ऑफ नुआ साइंस टेक्नोलॉजी आसुची जोटा आपण देखि पारुचंती जे आमे माने आकु ध्यान देले मनुष्यर जाति आगु को जाउछि. आपण माने थॉट लीडरशिप देखिए जदि मल्टीपल प्रोसेसेस अछि. आमे माने देखिछे द रेनेसां समय गोटे टाइप रो थॉट लीडरशिप थिला, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रे थिला. सिलिकॉन वैली रे आ गोटे मॉडल अछि जो थरे एंटरप्रेन्योरशिप, रिस्क टेकिंग, इनोवेशन, दैट इज आल्सो थॉट लीडरशिप. चाइनीज तांको निज हिसाब रे आनी छथि थॉट लीडरशिप बाय लेवरेजिंग स्केल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. ओडिशा रे मध्य विभिन्न लोक विभिन्न प्रकार करूछंती. थॉट लीडरशिप विषय कहबा पर प्रश्न आसुछि एटा ओडिशा पाई रेलेवेंट काहेकि आमे काहेकि आमे विभिन्न कथा करि परिबा, आमे थॉट लीडरशिप ऊपर ध्यान काहेकि देबा. मोर कारण दुई तीनटा अछि काहेकि ओडिशा रे थॉट लीडरशिप पाई आमे ध्यान देबा एवं यार बेनिफिट आम पाई कोन हबो. प्रथम कथा हला विभिन्न राज्य भारत रे विभिन्न प्रकार पोजिशन नहीं सारी छंती. धरंतु इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस फॉर एग्जांपल, एवरी स्टेट इन इंडिया टुडे इज डूइंग एन इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस. ओडिशा फॉर 2036 मस्ट नॉट फॉलो अनदर मी टू स्ट्रेटजी. ओडिशा नीड्स ए यूनिक स्ट्रेटजी एंड दैट कैन बी थॉट लीडरशिप फॉर अस. वर्तमान थॉट लीडरशिप पाई गोटे मार्केट अपॉर्चुनिटी अच्छी काहेकि ना वर्तमान दुनिया होची फेक न्यूज रो दुनिया. वर्तमान दुनिया होची चैट जीपीटी रो दुनिया जथरे पकई देले को शब्द रे गोटे मीडियोकर आंसर पाइबे, 10टा प्रश्न पचाले भी मीडियोकर पाइबे, नुआ आइडिया पाइबे नाही सेथु. वर्तमान आम सामने रे अछि जे आमे माने इजराइल रो उन्नति देखिछे, सिंगापुर रो प्रगति देखिछे. सिंगापुर एवं इजराइल ओडिशा परे तयारी हेतिले राष्ट्र हिसाब रे, किंतु से माने प्रगति करिसथि. मो हिसाब रे थॉट लीडरशिप विल बी ए यूनिक पोजीशन that Odisha can occupy amongst all the states in India that perhaps nobody else is thinking about, and that is why we should think about thought leadership. किंतु एटा करिबा पई ओडिशा पाखरे अछि कोन? आम पाखरे कोस्ट लाइन अछि 500 किलोमीटर, आम पाखरे मिनरल्स अछि, आम पाखरे स्पिरिचुअल सेंटर्स अछि. आमर डेट टू ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एट 14.7%. भारत सरकार कहउछंती 25% तळगु रहिबा कथा. आमर per capita growth is higher than in India. आमर फॉरेस्ट कवरेज बहुत अच्छी. आम पाखरे थॉट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी. ओडिशा रे 4टा सेंट्रल यूनिवर्सिटी अच्छी, 25टा स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी अच्छी, 21टा सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ओडिशा रे अच्छी, 37टा यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी अच्छी, 17 साइंटिफिक इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस अच्छी. एवं सर्वोपरि 62% ओडिशार पॉपुलेशन 40 वर्ष तले अच्छी. Our 62% of our people are below the age of 40, and that is there. The government has taken many innovative policies, and therefore I believe there are a lot of things that are there available with us why we can be a thought leader. But कौन नहीं आम पाखरे आमर पर कैपिटा इनकम एवं भी कम अच्छी. आमर हिंटरलैंड रे डेवलपमेंट बहुत हवा को बाकी अच्छी. आमर बहुत बड़ा ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छी, तांकर मध्य जो सब शक्ति अच्छी ताको आगु को केमती नबा बहुत काम होची मिशन शक्ति रे एवं अन्य प्रोजेक्ट रे. आमर लिटरेसी लास्ट सेंसस रे 63% थिला, एबे आगु जाइथिबो आउरी आगु नहीं परिबा.
मोर कहबार अर्थ है आम पाखे स्ट्रेंथ अच्छी एवं अन्य बहुत एरिया अपॉर्चुनिटी अच्छी जद्वारा आम या आगू को नहीं पारिबा किंतु प्रश्न आसीबो जदियो थॉट लीडरशिप इज ए यूनिक पोजीशन आम नहीं पारिबा आमर ये सब्जेक्ट रे ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी ना नहीं ना करि पारिबा कि नहीं सेटा गोटे चमत्कार प्रश्न आपण माने जदि इतिहास रे जिबे पठाणी सामंत को मन पकेइबे आपण माने जदि इतिहास रे जिबे डॉक्टर प्राणकृष्ण परिजा को मन पकई पारिबे आमर इतिहास रे थॉट लीडरशिप रो अनेक एग्जांपल अछि एवं पर्टिकुलरली ओडिया भाषा लैंग्वेज लिटरेचर अच्छी मुझे किसी उदाहरण देवाक चाहूँगी पिला बेले मु शुणिथिली गोपबंधु दास लिखिथिले रह रह क्षणे बाष्पीय सकट देखिबी चिलिका चारु चित्रपट जेतेबेले मु पिला थिली भाबिली चिलिकार दृश्य से वर्णना करुछंती वर्तमान जेतेबेले ए विषय चिंता करुछि मु भाबिली उत्कलमणि गोपबंधु दास कहिथिले आ गोटे व्यक्ति गोटे वक्तव्य देइथिले से कहिथिले मोर इंटरप्रिटेशन यही जे कही रह रह क्षणे बाष्पीय सकट जोटा ट्रेन सेटा होची स्टीम इंजिन एटा होची टेक्नोलॉजी रा प्रोडक्ट से आमको मेसेज दौथिले दैट ह्यूमन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट मस्ट बी सबसर्बिएंट ए मीन्स टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर कॉल्ड चिलिका आई थिंक जेतबेले मो पिला थिली वेत ये इंटरप्रिटेशन टा बुझी पार नथली किंतु एटा थिला गीत गोविंद रे जेतबेले भगवान श्रीकृष्ण राधा प्रेम विषय जयदेव लिखिले भगवान श्रीकृष्ण मध्य किसी दुर्बलता थिला किंतु राधा एवं कृष्ण का प्रेम सब्सिक्वेंटली जितेबाला हैला सेटा देखिला परे सेतरे मध्य लिखिथिले अष्टनायिका तापरे केते व्यक्तित्व हैला बासंती बोली गोटे नेटवर्क नोवेल आम मैंने लिखिथिले 9 जन अथर लिखिथिले ताको वर्तमान आम मैंने कहूचे कोलाबोरेटिव नेटवर्क प्रोजेक्ट सेटा मध्य नोवेल ओडिशा लिटरेचर थिला कुंतला कुमारी सावत कहते कि महिला मानक कैरेक्टर को नहीं नोवेल लिखुथिले एवं वर्तमान विमेन एम्पावरमेंट उपर ओडिशा सरकार काम करुचंती गोपबंधु दास लिखिथिले पुण्य जन्म बाटी पुण्य देवालय उद्धरिबा पाई कले तनुक्षय मानव जीवन होई सफल ए महादीक्षा कि बुझिब उत्कल जेतेबेले पुण्य जन्म माटी पुण्य देवालय कवि लिखिथिले सेतेबेले से कहउथिले एटा इंस्टीट्यूशन इट इज नॉट अबाउट टेम्पल इट इज अबाउट इंस्टीट्यूशंस जेतेबेले कहउथिले उत्कल गौरव मधुसूदन दास लिटरेचर लिखिले कहिले जाति नंदी घोष चालीब कि भाई स्वार्थ को सारथी कले टाणे किरे गाड़ी दानर थोबड़ा घोड़ा मुहे बंधा थिले he was talking about conflict of interest which is today so important in corporate governance global business conduct of state and government affairs conflict of interest has become a big subject so what I'm saying ladies and gentlemen is thought leadership can be created in Odisha in many areas in mining marine tourism coastal area management tribal welfare women empowerment weather systems management government of Odisha has managed cyclones disaster very well new investment assimilation one area investments asuchi one of the important ways we can create thought leadership in Odisha to ask people of Odisha कि 2036 रे आपण माने ओडिशा रे कोन देखिबा को चाहुचंती no state in India perhaps or in the world has ever involved the citizens to create the idea of a future the question is can we do that in Odisha by involving people thought leadership केमिति create करि परिबा बहु प्रकार ओडिशा रे करि परिबा हमर समस्त लाइब्रेरी कॉलेज माने करे स्टैंड अलोन लाइब्रेरी अछि why can't we connect all the libraries of Odisha online so that कोरापुट रो लोक देखि परिबो बालेश्वर रो कॉलेज लाइब्रेरी कोन कोन अवेलेबल अछि से एक्सेसिबिलिटी इंफॉर्मेशन बढ़ाई परिबा आमे माने गोटिए थॉट लीडरशिप कॉन्फ्रेंस सब वर्ष करि परिबा ओडिशा विषय रे Davos kind but not Davos like many of you remember the criticism about Davos it says that Davos is a place where billionaires come together to tell millionaires that how to make the middle class get the poor class to work harder. We don't want that criticism. We want practical ideas through a Davos-like conference here. We can create thought leadership networks. आपण मानकर मने थिबा 1980 मसिया रे से समय रे अफ्रीका रे फेमिन हेइतला 40 जण म्यूजिशियन
पृथ्वीर जो मैंने कम्पीट करथिले निज भितरे से मैंने एकाठी आसिक गोटे गीत बनई वी आर द वर्ल्ड 40 जन म्यूजिशियन माइकल जैक्सन इत्यादि इत्यादि समस्ते आसते वी हैव टू क्रिएट नेटवर्क्स ऑफ लीडरशिप टू क्रिएट स्ट्रेंथ डिराइविंग फ्रॉम व्हाट वी हैव डन स्कूल एवं कॉलेज रे पिला मानकु सिखेबा को पड़िबो चिंता केमिति करिवे हाउ डू दे थिंक अबाउट ए प्रॉब्लम हाउ टू आर्टिकुलेट ए प्रॉब्लम वी हैव टू क्रिएट ए न्यू नैरेटिव सो ओडिशा 2036 रे कोन हे परियो we can aspire to be in top of human development index in India. 5 minutes more, 3 minutes more, 1 minute more, okay. We can be in the top of the per capita income in India. We can have 10 global knowledge centers over next 12 years. We can, like D1Q transformed Singapore, we can create 30 garden cities in this state with one city in every district. We can create moment marketing, experience marketing of Nava Kalebar, Parikrama Ghat नाम मैंने करथिले. गुजरात रे सरकार सेठी करछन्ती gift city. Odisha रे we can create 30 cities, we can call them shift city. Shift रो full form मो पाई हला societal and human innovation from technology. Shift city. Societal and human innovation from technology. लास्ट रे मुझे कहबी सुब्रत बाबू मते वार्निंग देलेनी 2 मिनिट पाई सुब्रत बाबू ओडिशा रे भोग बहुत जरूरी महाप्रसाद का भोग सब जगह भोग ये भोग को इंग्लिश रे लिखिले लोक मान लिखिवे BHOG ये भोग BHOG मो पाई गोटे मायना रखे तार एक्सपैंड फॉर्म लिखिची बिग टाइम हंग्री ओडिया जनरेशन दैट इज भोग टू मी एंड मु आज जानी जे उत्कल गौरव मधुसूदन दास जिते कही उठरे उठरे उत्कल संतान उठबू तू केते दिने पूर्व गौरव पूर्व साहस पड़ब कि केबे माने आज उत्कल गौरव उपर हसुथिबे आशीर्वाद करथिबे जे ओडिया जाति जो भोग जनरेशन बिग टाइम हंग्री ओडिया जनरेशन आज उठिची निजर पोटेंशियल को रियलाइज करुची देश को आगो को नब उत्कलमणि गोपबंधु कही मानव जीवन नुहई केवल वर्ष मास दिन दंड कर्मे जीए नर कर्म एका तार जीवनर मानदंड प्रश्न होची आमे माने कौन करिपरिबा इंडिविजुअली कौन करिपरिबा तीनटा कथा करिपरिबा प्रथम रे सब कथा समालोचना न करी सकारात्मक मनोवृत्ति रे समस्त संगे सहयोग करी भविष्यतर कल्पना करिपरिबा द्वितीय कथा अन्य मानकर जो पर्सपेक्टिव अच्छी ओपिनियन अच्छी ताको शांत भाव में शुणी पारिबा लिसनिंग कैन बी ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर द फ्यूचर ऑफ ओडिशा एवं तृतीय रे जेतेबेले जदि ओडिशा सरकार पचारिबे 2036 रे ओडिशा पाई कोन स्वप्न देखिबा को चाहुचंती आमे माने लार्ज स्केल रे पार्टिसिपेट करी निजर आइडिया देबा एइथरे आपण मान को धन्यवाद करूची आपण माने मते एथि निमंत्रण करे जय वंदे उत्कल जननी थैंक यू After that very inspirational address by Dr. Santok Mishra, I have the pleasure to invite the Chief FinTech Officer of the Singapore Monetary Authority, Shri Swapnendu Mohanty. Please give him a big hand. Korotali dei tanku swagat karantu Odisha ra baraputra Swapnendu Mohanty. Jai Jagannath. It's an extremely deep privilege to be here. Mataji sakale Bakshi sir कहले किछु ओडिया रे ओपनिंग करिवो इंग्लिश बेसी कहबोनी कालिठु मते टेंशन लागलानी केमती ओडिया रे स्पीच ता देबी मो आगरे दुईटा भलो ओडिया रे स्पीच हला सो मो जो स्पीच लेखिक आसीथिले तार किछि काम दबनी आउ एनीवे मु ट्राई करिवि Today, I am here not representing any institution, but me as an individual who was truly made in Odisha. Mu Odisha re janma heitala moro ite
मुझे बढ़ी मो फाउंडेशनटा ये क्रिएट होता ता उपरे मैं छोट छोट बिल्डिंग क्रिएट कली आज भी क्रिएट करुच्ची आग को भी क्रिएट करी सो ये फाउंडेशन मो जो क्रिएट होता ओडिशा रे हैज स्टिल गिविंग मी लॉट ऑफ एडवांटेज आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट टू कॉल माई सेल्फ मेड इन ओडिशा जब संजय जी आ बाची साहब मत फोन करले कि यहाँ मतलब टॉपिक अच्छी तुम आसब मो पाखे मो स्केड्यूल टे चैलेंज थिला किंतु एत बढ़िया टॉपिक को मुझे छाड़ी इच्छा नाला मुझे छुट्टी नहीं कि आसी मु काली सिंगापुर बैक करी ऑफिस को गोटे दिन छुट्टी नहीं कि आपण सांगे इंटराक्ट करी आउ कि जानी नुआ जिनस आ प्लस किसी शेयर करी बिफोर आई स्टार्ट माय स्पीच मुझे डॉक्टर संतोष मिश्र गोटे एग्जांपल देले थॉट लीडरशिप तार गोटे मु बड़ एग्जांपल निजे जैसे 2015 सर मुझे मत सिंगापुर गवर्नमेंट कहला टू बिकम ए चीफ फिनटेक ऑफिसर मु 6 मास पे बुली आसली चारि ऑल ओवर द वर्ल्ड मत समस्त कहले सिंगापुर फिनटेक किसी चांस नहीं जीरो यू डोंट हैव ए ह्यूज मार्केट तुम कौन फिनटेक कर आसिली बैक कली मु भाविली चाकरीटा मुझे छाड़देवी बैक टू सिटी बैंक जड़े मत कहला जे डू समथिंग बिल्ड सम थॉट लीडरशिप मत लगला से कहते गोटे सेमिनार कर छोट सेमिनार 100टा लोक आसिले संगे डिस्कसन करवा जे केमती सिंगापुर गोटे फिनटेक स्ट्राटेजी हो मु गोटे अजाणतार गोटे वेबसाइट रे पकईदेली कि आम यहाँ डिस्कसन करवा ग्लोबली आसत लीडर मैंने आसिक आम साथ डिस्कसन करूँ से वेबसाइट रे विदिन 2 months 1000टा लोक कहले वी वांट टू जॉइन मो स्टाफ मत कहले आम गोटे रेगुलेटर आम एटा इवेंट कंपनी नुहे एटा बंद कर तापर जड़े वेरी सीनियर लेडी गली कहली मत टे कष्ट हम यहाँ करने आपन साहय करेंगे आ मिसिकी इवेंटा करवा मुझे गोटे एक्सपैंड करी से वेबसाइट रे आई अलाउड मोर रजिस्ट्रेशन टू कम विदिन 2 months 4000 लोक कहले आसी से जॉइन करेंगे से सेमिनार को आम ता ना चेंज करदेलु सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल कहलु मंथ ऑफ नवेम्बर यूएस सिलेक्शन से ट्रंप वाज लाइकली टू विन द इलेक्शन प्रेसिडेंट ट्रंप जो दिन से इलेक्शन डिक्लेयर है मो वेबसाइट क्रैश करीगला 8000 लोक वांट टू रजिस्टर फॉर दिस इवेंट आज से इवेंट is world's largest global mind share for thought leadership in fintech because of that platform Singapore रे 2015 रे $20,000 Mr. $20,000 total fintech investment in 2015 guess what is today $4 billion 5 वर्ष रे गोटे प्लेटफॉर्म ग्लोबल थॉट लीडरशिप माइंड शेयर प्लेटफॉर्म $20 million को करदेला $4 billion so I absolutely agree with you building a global thought leadership is the fastest way to create a global powerhouse thank for sharing that in your speech देखिए मो स्पीच भी भूली गली मु तापर कहबी जते बड़े बागची सर मत कहले एटा स्पीच एटा आसिक आबिस डिस्कशन करंतु मु बाला सर को देखा करली खारबेल भवन रे मते बाला सर कहले दुईटा वर्ड कहले एंटिक्विटी एंड कंटिन्यूटी से दुईटा वर्ड मो मुंडे पशला मु 100टा लोक कही सारे यही दुईटा वर्ड शिखिली बालासर पाखु एत मत इम्पैक्ट कर दुईटा वर्ड कि दिस इज ट्रू एसेंस ऑफ फ्यूचर ऑफ ओडिशा इन माय सेंस इन 2036 ओडिशा विल नॉट merely inherit its antiquity but is going to thrive upon it because our vision definitely should be based on the culture of antiquity. Why? I believe the essence of antiquity is humanity. It is a humanity which makes us distinctly different from other parts of the world. So, Bala sir, I'm going to add third word, antiquity, continuity, humanity. So this should be the 3 words on basis of which we should build the 2036 plan.
मते बहुत लोग पचारती based on your foundation in Odisha, how could you do what you do? I think one of the simplest answer is that I developed a skill set of human empathy. And that is a single way which I could succeed in my life. So having that humanity as part of your culture, value system truly works. So what should be the plan for 2036? ମୁଁ ଆଜି ତିନିଟା ଜିନିଷ କହିବି. One is beyond growth, beyond profit, beyond degrees. But I'm going to start with a very serious topic. And the first point is, how do we deal with one of the most existential crises of our lifetime? Upon global warming, it is a real crisis. Odisha has got a long 480-kilometer coastline. We have the world's second largest mangrove. We have a great lake, Chilika Lake. Most of our iconic temples are on the coastline. 30% of our GDP or 30% of our population stay on the coastal districts. And if the world at large fails to meet its goal by 2050, the water level is going to rise by half a meter by 2100 years. At 2100, it should be more than a meter. Significant part of Odisha's GDP will collapse. Significant part of our ecosystem will collapse if you don't focus on this issue. Right, I would have both serious issue. Our 2036 plan should consider by design sustainability. By design, it should be ESG, environmental, social and governance construct. Because if you don't look at it, we'll see a massive impact to our economy. Millions of people will get displaced, coastal lands will submerge, there'll be a lot of salination of the soil, marine fisheries will get affected, and we'll have a widespread damage to our broad societal construct. So what should we do? If you look closer, there is some hope. In fact, because I was preparing for the speech, I went and did some research. And I was surprised to find Odisha government has a climate budget. It is such a surprising, delightful surprise to me that Odisha government has a climate budget. I don't think many places in the world actually think in this way. And I'm also surprised the quality of data, the quality of construct they build in the budget is world class. And the numbers are actually speaking to it. If you look at today's Odisha's effort of the climate budget, today I think Odisha has achieved close to 5 gigawatt of renewable energy. The forest cover has moved from 21% to 24%. Mission Shakti program is actually designing women empowerment on sustainable programs, which is truly an outstanding effort because 70% of your economy will be SMEs, and that is dominated in Odisha by women. That's whole focus will change everything we do in this space. We all know Odisha's State Disaster Management Authority is a global benchmark best practice of how to deal with this crisis. And I believe that that climate resilient infrastructure is a big part of this authorities thinking about long-term plans for Odisha to deal with climate change. But our journey shouldn't end here. We should look not only at 2036, we should look at a clear roadmap for a net zero emission by 2050. So one of the requests to the policymakers in this room is to build a plan by 2050. Can Odisha achieve net zero? There should be a policy statement which should come out by the 2036 plan to get Odisha to a net zero emission. And if Odisha can do it, it will be truly a global benchmark of how to get there in the most efficient way. But I want to leave with you on this particular topic few ideas. I think there are few areas we should look at. Renewable energy should be a big part of our thinking. Solar, wind, biomass should be a pillar of our new energy sources. Sustainable agriculture should be part of the practice. We should find a way to fund farmers to look at climate smart practices.
Singapore, a small island, is very much worried about our existence because we are surrounded by water. And we believe in 100 years we may get submerged. So we've got to prepare for it now. We can't just leave it to the end part of the likely crisis point. We should also have to empower our citizens to understand what does it mean. We need a lot of educational program. We need a lot of upgrade to our school curriculum at high school level, at the college level, at the tertiary level, understanding the impact of climate. I think that's the key to the success of getting there. So I would request everybody a collective call for action for everybody, for businesses, for farmers, for citizens, civil society to come together to think about this existential crisis of climate change. But I'm going to leave with one big idea. And Bhakti sir, this is something we've got to think very carefully. One of the biggest hindrance to climate change is lack of data. And the second part is disclosure. How do we get people to disclose data about climate issues? So one of the things Singapore is working very strongly is building a national level utility called disclosure platform for small businesses, for individuals, for corporate to disclose data about ESG. I think what Odisha need as part of your 2036 thinking is to build a disclosure platform, frictionless, digital, so that we can get enough data for the policymakers to make the right choices and get the right finance to fix it. So that will be one big idea in the space of sustainability. Moving on, कितना time अच्छे sir? 3 minutes. Okay, that's a challenge. 4 minutes. The second idea is, how do you think about beyond profit? Because we are a state of abundant resources, very vibrant culture, very resilient people, and our challenges are plenty. We have a lot of inequality still. We still have challenges in getting people access to digital platforms. But do we want to think about creating a framework where profit is the motive of our growth? The answer is no. We got to figure out to build a framework where it should be equitable, green, and digitally native. Let me quickly explain each of them. And I think Odisha is doing a tremendous job in this space, especially on the financial inclusion. And Sujata madam's effort on Mission Shakti is truly around financial inclusion. And I just told her she's in a big demand outside India to come and share her success story. So we hope get to learn some lesson from Odisha how to build inclusion finance. But there are two things we got to think about it. There are 3 areas where we should focus on to build a beyond profit strategy is to create an impact investing fund, because we need capital to fund these things. It's very difficult to only have public money to support impact. We got to have a blended finance structure where we can bring private money and mix with public money to build that impact. So we need a lot of impact financing capital with this partnership. Second thing, we got to create a climate finance capital as absolutely necessary. If you don't build it, how are you going to green your economy, and then how to build a sustainable financial architecture? And lastly, which is very technology focused, is called embedded finance. How do you make finance digitally embedded in every sector so that whenever you need credit, cash, capital, it is part of the transaction, whether you are in education or you are in health services or you are doing, let's say, travel and tourism. Finance should be deeply integrated in that whole construct as an embedded finance. So I hope that this triple bottom line strategy should work and will help Odisha to look at a new framework for how to finance the growth without profit being the main objective. I'll go to a minute, sir. The third part of my thinking is how to think beyond degrees. And I think I can deal with 1 minute because the biggest expert in this big hall is sitting here, Mr. Bhakti sir, who has done tremendous work in this space, and he thinks about how to develop skill set beyond degrees. I have only 3 words there. We should think about 3 elements of human body: heart, mind, and hand. When it comes to mind, we have professional degree. When it comes to hand, we have vocational skills. But one thing we are missing, it is heart.
how do you teach empathy to people? Because we got to, in the new world, we got to bring it together. We got to bring heart, mind, and hand together. I think what Odisha need, a lot of focus on the education side to see how can you teach empathy to people. Because in the world we live in, kindness becomes the single strength of your personal professional development. We got to be kind people. We got to be nice people. We must show respect to everybody. To me, that's a single skill set we miss today. If you have it, I can tell you, the world is yours. Thank you very much. आपण मैंने केतेटा अनुभव कर मु जानी पारनी थोड़े आपण मान को कहीदेव को चाहिए दिस स्टेज इज द वर्ल्ड स्टेज एटा विश्वर मंच थोड़े भल कर अनेक देखु सिंगापुर प्राच्यरु आरंभ होइछि भारतवर्षरु विश्व एवं एठी अछंती पाश्चात्य so the entire world has been covered with our three speakers from the just one moment, just one. So we have the best talents produced from the bottom of the pyramid here who are ruling the entire world with the thought leadership. Dr. Pandankar Bohi बहुत दिन आगु पढ़ी Nobel Prize रू 3 step दूर रे अछंती भगवान करंतु आगु जातु डॉक्टर सचिन पंडा. Thank you. Namaskar. Bande Utkala Janani. Thank you. मत जिते निमंत्रणटा आसला it actually stirred up my head to think about what am I going to say. And then one thing that really resonated is a saying that our Honorable Chief Minister says that every life is precious, every life is important. In fact, to live at our optimum physical, emotional, intellectual, and spiritual health is a universal human right and a universal human aspiration. In parallel, as a community and society, we aspire to be culturally, financially, and technologically a prosperous society. And all of us, whether you're a scientist, a policymaker, a thought leader, or a bureaucrat, we all share the responsibility to make every life precious and our future brighter and more prosperous. With that vision, I'll share with you how I am imagining Odisha will look like in the next 12 years. And I'll summarize this in 10 specific thoughts. So before I go, I must say one thing. You know, I नौटा स्कूल पढ़ी आसली जिते फ्रिक्वेंटली गोटे स्कूल रू आ गोटे स्कूल को जीव से आ सांग साथी आ कहीं रही आउ बाहर भी जाइना खेला खेल भी बेसी करी हलानी. But how did I spend my time? Actually, what was very crucial, looking back, is बहुत समय मोर स्पेंड हला ओडिया बही पढ़िबारे. From Fakir Mohan Granthavali to Odia translation of many internationally renowned books, I read a lot. And in retrospect, I realized that those Odia books actually instilled a very strong foundation for me to look at my future, look at the society, and look at where I am and what's my duty. And going back to my vision for 2036, so 10 number बर होउछे biodiversity.
why should we think about biodiversity? When you think of biodiversity, I think of our kitchen. So for example, मो किचन रे जदि विभिन्न प्रकार खाद्य सब अच्छी परिया पत्र अच्छी स्पाइस अच्छी is fully loaded, then I'll be more prepared to prepare a meal for anyone in my family, whether he's sick or healthy, whether it's summer or winter, or whether somebody has food allergy or not. Similarly, when we have a rich diversity, then we can also come up with better crops. The good news is, in Odisha, we know we have many, many species of plants and insects, but we actually have very little idea and catalog of how many different species are out there and how to grow them and multiply them. For example, in Bhubaneswar alone, if you walk around, you'll find nearly 3,000 species of plants at least. But Odisha has also built some of the fantastic infrastructure to preserve, capture, and monetize this biodiversity. The University of UAT, then the government departments of horticulture and agriculture, regional plant research centers, all of them have the skills and wisdom to catalog and preserve our biodiversity. For example, if you go there, you'll find that there are nearly 600 types of cacti, 400 types of roses, and dozens of different types of orchids are already collected there. And now the scientists there are growing some of these very high value orchids in a relatively small area to make high value crop. Imagine if we can bring more resources and more skills to biodiversity so that in 10 years or 12 years, we'll actually have a much better catalog of thousands of species that are present in Odisha. We can figure out how to monetize some of those species so that our farmers can grow them and have a share of the global market for new spices, new medicinal plants, and also new cash crops. Once we have all these thousands of species growing, we can also bring medicinal chemists. You may or may not know that more than 50% of the drugs that we currently use to treat anything from diabetes, depression to dementia and cancer actually go back to some molecules that are found originally from plants or a bug in land or sea. So we actually have a lot of potential to find new drug, new cure for animals or plants or even humans in our biodiversity. So the next, number how to go from food security to nutrition security. When we think of food, it's something that we eat to give us energy. But actually, when you think of food, the next level we think of carbohydrate, protein, fat, or oil. But beyond that, everything that we eat has almost dozens or hundreds of different vitamins, minerals, and nutrients that give us our vigor, vitality, and resilience against illness and disease. The state has done an outstanding job in producing enough food for all the ODIs and also exporting food. So our next challenge or opportunity is to make our crops and vegetables more nutritious, at the same time more resilient to climate change and have increased yield, and at the same time should actually be selling at a higher price point. This is where we can have three-pronged approach. First, as we have seen with the Odisha Millet Mission, actually I was surprised with the Odisha Millet Mission, and it was very delicious to eat some of the millet products like cookies, cakes, etc. So now we have seen that farmers can grow millets that can grow in more adverse conditions, produce food that's more nutritious, and also sell at a higher price point. In fact, in US, it's at least 3 times more expensive to buy bajra, mandia, than to buy rice. Just imagine if we can grow them and export, we can actually
not only bring money to the pocket, actually the farmers can put money in the bank. Second, we can go back to our biodiversity kitchen that we just talked about, and then imagine if we have one type of crop that can grow in hot climate, but it doesn't have the right yield, and another crop, another species that can give a lot of yield, but cannot grow in hot climate. So this is where modern plant breeding and genetics technology will be transformative. In fact, in Odisha, we have seen our plant breeders have been extremely successful in using traditional breeding approach to make sure we have food security. And now, for the next 10 years, we can now adopt all these advanced technologies. And specifically, I'll focus on 3 key technologies. One is DNA sequencing, to know the genes and DNA of at least 1,000 plant species that are in Odisha. And second, to use the new CRISPR technology that got Nobel Prize a few years ago, so that we can quickly take a gene, put it back into another crop, and make a designer crop in less than 10 years. Because traditional breeding technology takes 10 years or more to make a desirable species. And third, what I call mass spectrometry technology, to figure out that what we created is actually nutritious. So you may find that these technologies are too intimidating. But what I told you about is what we call molecular biology. Just like hardware and software are the common currency for information technology, molecular biology is now the common currency for life science. And once we adopt this technology in Odisha, then they will also open new avenues to make better crops, better livestock, discover new drugs, make new diagnostic kits for humans, and also help us in precision medicine treatment for many diseases like cancer. Coming back to plants and crops, as we see with the climate change, one mandate is actually to reduce our carbon footprint. And in fact, back in Salk Institute, we are developing new technology by which we can select different trees, crops, even grass, that can capture more carbon from the atmosphere and put them back into the soil. Just imagine, Odisha has more than 400 kilometers of coastal line. If we can have much better mangrove and all these species that can capture more carbon and put them back into the soil, Odisha can also make money out of carbon cap and trade system. So, 8 number है healthcare infrastructure. A robust healthcare system is absolutely necessary for any healthy economy and prosperous country, because it has both direct and indirect benefit. Better healthcare makes everybody who is in the workforce healthy. And second, better healthcare also makes children and elderly people less sick, so that the person who is working spends less time caring for the sick people at home. Odisha has done a remarkable job in directly investing and attracting investment in health infrastructure. We can build on this initial success by focusing on 3 topics: education, research, and healthcare delivery. When I talk about education, it's not only educating doctors. We have to educate at all levels of healthcare professionals, from village healthcare workers to nurses, physician assistants, doctors trained in Western or Eastern medicines, and as well as specialists and super specialists. Odisha now has many colleges, and the good thing is they have all been put together under the Odisha University of Health Science, which actually gives us a shared vision and more structured plan to use education and research for our future healthcare improvement. Let me focus on a couple of topics in healthcare that can actually be achievable and transformative. One thing we need to invest is IT infrastructure in medicine, and along that line,
electronic health record or electronic medical record. Let's make sure that every government teaching hospitals or every government college, medical college, has electronic health record that will cover lakhs of people who come and visit these teaching hospitals every year. And once the medical records are digitized, patient appointments, reminders, visits, all of this can be automated. And once we have this infrastructure, why not to go to telemedicine so that a patient in Malkangiri can actually get to see a doctor in Bhubaneswar or Cuttack. And as these infrastructures are in place, it actually opens up tremendous opportunities to catalyze additional research and precision care in medical schools. And just imagine, once we have these medical records of lakhs of people making lakhs of visits, suppose say one day I'm diagnosed with cancer and I go to a doctor. Then the doctor can actually find many hundreds or even thousands of people who had the same condition as me, and will also find some who responded to a specific treatment and those who did not. So in that way, just by mining the data, the doctor can make a better choice to treat me well and thereby reducing healthcare cost and also increasing efficacy. Similarly, almost every major country runs what is called longitudinal health survey and longitudinal health monitoring. In such cases, thousands of people's their health status is monitored every year after year because we're all different. What scientists are finding a risk factor for disease in Europe or US may not be risk factor for people in Odisha. And conversely, we may find something is a risk factor in Odisha, but not in the US. And there are numerous examples like this. For example, Qatar actually started a similar program. They followed 100,000 Qataris. And they found that there are many diseases that are unique to Qatar, and they respond to specific type of medication and treatment than what is typically prescribed. So to make this transformative change in health infrastructure, we also need investment in IT, as well as hiring other expertise like data scientists, statisticians, PhDs to medical school, which is typically unheard of in our country because we think of medical schools as schools where only physicians work. But actually, in most of the Western countries, the research and development is a teamwork. So when I'm talking about healthcare, let's focus on few other things. So our 7 number is maternal health and newborn health. Odisha has made tremendous progress in reducing childhood mortality and also improving maternal health, but at the same time, it's still lagging behind the national average and international average. So this is where we can take advantage of a robust healthcare system. The first, in most Western countries, there is a preconception education for a healthy pregnancy, including, for example, weight management, nutrition management, prenatal vitamins and minerals to foster a healthy pregnancy in all women. We can adopt that. It's pretty easy. Second, genetic testing during early stage of pregnancy to detect any serious genetic disease in the fetus. And this is a very key component that's an integral part of maternal health in Western countries, which is rarely being used in India. Why not to try it in Odisha? Then third, personalized care to prevent or manage gestational diabetes and many other diseases that typically affect women during pregnancy. And this is where, again, we can make a lot of progress. And fourth, as every child is born, why not we come up with a comprehensive test of that newborn child within 48 hours of birth? Because, for example, in California, where I live, every child is tested for at least 24 different conditions. And in that way, you can actually capture
whether this child has any newborn defect, and most of that can be corrected by simple change in nutrition, some medication, and also some hormones. And in that way, we can improve, we can reduce infant mortality and foster the growth and development of healthy children. These are all achievable. Then more 6 number hochi preventive care for all. Disease prevention is the best treatment. Just like many infectious diseases can now be preventable by sanitation, vaccination, and antibiotics, many types of chronic disease, non-infectious chronic disease like blood pressure, diabetes, heart disease, and many types of cancers are also preventable if they're detected, the risks are detected early. The state already has some infrastructure and program in place. For example, the BSKY, Biju Swasthya Kalyan Yojana, already covers 90% of people in Odisha. And that's a huge achievement. Just imagine if all 4 crore of, or more than 4 crore beneficiary of Biju Swasthya Kalyan Yojana go for at least one health checkup, comprehensive health checkup, once in every 5 years, starting from 20 years of age. We can capture the risk factor in all these people, the entire population, and begin intervention with better nutrition or lifestyle. And similarly, why not to make it mandatory for every government employee or people who are working in private sectors, before they pay tax, to actually have their health checkup, annual health checkup, to check their blood pressure, blood cholesterol, and blood sugar. And that itself, the thing is, if you cannot detect or measure something, you cannot change it. And the first thing to prevent is to detect whether there is a risk factor. And in fact, in the US and in many other countries, now the lifestyle factors that we developed based on my research is now used to prevent and reduce the risk for heart disease by managing these lifestyle factors. So number 5 is elder care. If a person was born in 1936 in Odisha, that person was likely to live only 36 years or less. And by 2036, if a person is born in Odisha, the life expectancy will be at least 75 years. And that's more than doubling of lifespan is just 100 years. However, as we grow, as we live longer, we are also at a highly prone to many diseases. And in fact, right now, we are living at least 10 years of our life with 2 or more chronic conditions. Nearly half of all adults beyond the age of 45 now carry lifetime risk for heart disease or cancer that needs some intensive medical care and also post-survival care. I don't know exactly the number, but I bet almost everybody who is here, they know someone within their family or within their friendship who had at least one incidence of heart attack, stroke, or cancer, or those who have arthritis, back pain, and joint pain that actually make people less active. So we have to care for them. By what? So the first is we need super specialty high-end hospitals with the state-of-the-art technologies so that patients from Odisha don't have to fly to Chennai, Mumbai, or Singapore to get their care. They can get their care here. Not only that, maybe people from Chennai, Singapore, and Bombay will come to India to get their care. And then second, we also have to improve our rehabilitation and survivorship. Because in Odisha alone, there must be at least 20 to 40 lakh people who are now living after a heart attack, after a stroke, or after at least one treatment of cancer. And all of them need rehabilitation care. In fact, in the Western world, if someone has heart attack, they go to a rehab center to come back to full functionality. So we can definitely do that. Then when you're talking about health and wellness,
UNESCO has recently started a program, 10-year program called Fit for Life, and I was involved in part of that. The idea is, as we are becoming more and more sedentary and our children are becoming more and more sedentary, the lifetime risks for various diseases are also going up. So the UNESCO is planning to do a 10-year initiative called Fit for Life, which promotes health from the age of 12 to 35 by making sure that the schools and colleges that our children go to have quality physical education and opportunity for physical activity. Odisha has done a lot in this regard. For example, this morning, I went for a run, and I easily could run for 10 kilometers with safe sidewalk and parks. Just imagine if we have this facility in almost every single block, every single subdivision and district, and also make it safe so that not only people like me who are males, but women and girls can also go and run and be active. Because to be frank, today I saw at least 50 people running, not a single woman was running. Because of what? Maybe there is a lot of responsibility at home in the morning, or maybe they don't feel safe to run on the sidewalk. And then we also have to think about, just like we make temples and people go around the temple and get spiritual health, we have built a lot of stadiums and a lot of sports facility. Why don't we make them accessible to everybody so that at least for 1 or 2 hours in a day, people can go and run around those stadiums? Because just like temples are better for spiritual health, stadiums and sports facility and parks are also temples for physical health. Then more tin number is sports. The pinnacle of human performance and health and fitness is sports. To be an athlete of national or international stature, one needs to be fit in brain and body, train well, and have a leisure-sharp focus on winning. The qualities and determinations that make a great athlete also makes a great leader. So it's not surprising that nearly 60% of CEOs of US large companies were actually state or national athletes when they were in school or colleges. So, and also, hosting a sports event is a challenge because it shows the pinnacle of governance, the pinnacle of having great facilities, infrastructures, and also sports medicine so that athletes from all over the world can come to a place. Odisha has done well. Let's hope that Odisha one day can host an Olympic or an Asian game. And also hope that at least in the next 12 years, Odisha will produce 10 international level athletes who can bring home gold medals. The number 2 is going from skill development to specialization development. Odisha has done extremely well in skill development. The next step would be to develop specialists, to increase the higher education. And in that way, we can actually transform the state from creating money to creating wealth. And then finally, we cannot think of future without IT infrastructure. Because remember, just imagine 10 years ago, nobody thought that an iPhone with more than 64 GB will be ever useful. But now we need at least 1 terabyte of memory in our phone. So we cannot actually imagine how much of IT infrastructure we need in future. So that's why let's plan for more than what we need. And once we have the IT infrastructure, we can do a lot. And we have seen much, and there is a lot of potential. So in concluding, many of the ideas might look very lofty, pie in the sky. But let's face it, we work hard. For what? To make sure that our children live a happy and prosperous life. Because we want to be good ancestors. At the end of the day, we have to be good ancestors. So that's why
for the sake of being good ancestors and make sure that our next generation of Odia, next generation of people, our children are proud to be Odia. Let's dream big and play hard. Thank you. सुंदर कहले डॉक्टर पटनायक डॉक्टर पंडा आई एम सॉरी डॉक्टर पंडा वर्तमान समय आसी भविष्यतर जो माने उपासक आगामी पीढ़ीर दुई जन स्टूडेंट अच्छा आम पाखे छात्री अच्छा समीक्षा एवं सौम्य तांको आखिरे कौन स्वप्न अच्छी ता शुणा प्रथमे मु अनुरोध करी समीक्षा को जे आईन रो छात्री आसिक 5 मिनिट तांकर स्वप्न आपण को पाखे कहिबे समीक्षा Namaskar Odisha, Bande Utkala Janani. I would like to begin quoting 4 lines of Swabhava Kavi Gangadhar Meher. Matrubhumi matrubhasare mamata chahude janami nahi taku jebe gyani ganare ganiba agyani rahibe kahi. A land where spirituality and nature unite for a soulful experience, where history whispers through ancient temples is my state of Odisha. A warm afternoon to all the honorable, respected dignitaries and everyone present here. I, Samikhya Tripathi, student of Madhusudan Law University, feel privileged to be a part of Bisso Odia Bhasa Sammelani, where as a youth of today, I can share my vision for Odisha at 2036, a space for tomorrow. Decades of struggle led to the emergence of our Odisha on 1st April of 1936. Since last 2 decades, Odisha has witnessed a rapid development in all the sectors with the due effort of our government, which aspires for sustainable development and transformative change. As a youth of today, I beyond a new and empowered Odisha by 2036, where I feel that in food sector, Odisha is an agrarian economy, where I believe our government through millet missions, state food security scheme and many others have tried to promote it. By 2036, I envision that from farm to fork, Odisha would adopt a precise and agricultural techniques, AI-driven farming systems, drones to ensure crop monitoring with diversification of agricultural land, rise of organic and sustainable farming. By 2036, we will witness the establishment of more food processing units and agri-business clusters, where our government through subsidies, infrastructure development, by collaboration with industrial association will enforce the stringent standards of food hygiene aimed at promoting our sustainable agriculture and food security. House is a dream of every man. Odisha, renewable energy resource, integrating smart technologies for resource management. By 2036, I expect Odisha to provide every person safe, affordable, and dignified housing and prioritize slum dwellers as well. Odisha has become a hub for education. There are universities, national institutes, degree colleges, culture universities, and many others. The multi-pronged push for quality human resource, infrastructure, and institution development and governance through more school, more college Abhiyan, Odisha Adarsh Vidyalaya has been very effective. By 2036, I believe there would be an inclusive education for all. There would be an integrated
integration of artificial intelligence and virtual reality into education, and focus would be on skill-based learning to meet the demands of a changing job market. I envision that efforts will be made to integrate Odisha's rich cultural heritage into education systems. There will be more adequate infrastructures and other expense programs with proper well-profiled libraries and the international collaborations and exposure of students to diverse perspective. I believe school would become the centers of excellence, nurturing the creatives as well, and thus the employment would rise and poverty would be eradicated. In health, I proudly say my Odisha is a role model. It has proved itself through COVID and even other programs. The government of Odisha, through Mamta scheme, which is Swasthya Kalyan Yojana, and others have tried to provide the quality in preventive and curative health services. By 2036, I envision Odisha to achieve universal health coverage by expansion of more medicals, employing more doctors, and by levying digital health technologies, providing proper medicines, advanced medical equipment to prevent disease and prioritize health and ensure holistic well-being and sanitation. From being the architects of society to making indispensable contribution to development, the women of Odisha have always proved themselves. And by 2036, I envision a Odisha where no agriculture will remain, where women will be uneducated. In sports, my Odisha will be more enthusiastic to promote it through various programs, and through science and technologies also will be improving in my Odisha by 2036. Disaster management, my Odisha has always proved itself, and by 2036, I believe Odisha will improve more in it. And in religion also, where we are known for its Jagannath culture, we will be improving more, and our religious diversity will be known for its individual well-being, social cohesion, and sustainable development. Along with it, the tourism sector shall also develop in Odisha as well as the industries. We know in judicial system, justice delayed is justice denied, and I expect my judicial system of 2036 Odisha will be more prone, and there would be specialized courts, emphasis on ADR methods, and efforts will be made to promote transparency and accountability even in cloth sectors. Before I conclude, I would like to say that in year 2036, my dream of Odisha will not just be a state of progress, but a beacon of innovation, and will witness a holistic development. And before I conclude, a few lines for my Odisha. ବ୍ୟक्त बारिधिर विशाल बेलाभूमि कनकमयी कननिका कीर्ति कराटिनी गुरु गंभीर तनाजिता तथा सस्य श्यामल समातुलकु नै गठित एही मोर क्षम्य उत्कल सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद समीक्षा। आपणकर समीक्षा रे आमे अभिभूत प्रभावित एवं से स्वप्न की स्वप्न जहाँ सिंहरण न खेलाई दिए आपण सिंहरण खेलाई। बहुत बहुत धन्यवाद। एथर शुणा सौम्या पट्टनायक रेवेन्सा यूनिवर्सिटी द्वितीय वर्षर छात्री। सौम्या आसतु। आपण समस्तंकु नमस्कार। Respected dignitaries and everyone present here, a very good afternoon. मु मोर सारा जीवन इंग्रजी मीडियम रे पढ़ी की निज एजुकेशन कंप्लीट करिछि, तो सेति पे जदि ओडिया कहला बेले किछिटा त्रुटि रहि जिवो पूर्वरु क्षमा मागी दउछि। तथापि आमे जानु छे भाषा ही भविष्यत आ ओडिया बोली गर्व जदि करूछि चेष्टा करिवि जेते हे परिबो ओडिया रे ही कहबा पई। जेतेबेले मु आजिर कनक्लेव रो टॉपिक ता देखिली ओडिशा 2036 a space for tomorrow, मु प्रथमतः निजको पचारली what should be our aspirations as an Odia, as a youth, as a girl, as a student of economics, and most importantly as a youth on whose shoulder the responsibility lies to move ahead, to make all those dreams into reality. मु जत कहिबी सत कथाटा तो जेतबे एते बड़ जिनसटा भाबिली कि एते बड़ दायित्व आमरी शोल्डर्स रे रहुछि, गोटे मोमेंट पाई भी इंटिमिडेट फील करिलिनी, डरिलिनी,
कारण मु सेई पिला जे स्कूल रे पढ़ी की आसी कि भल पाठ पढ़ी कला घोड़ा रे चढ़ी मधुबाबू सह लड़ी मु केबे भी मु सब बड़े उच्च आकांक्षा ही रखी माय ड्रीम्स कैन नेवर बी स्मॉल एंड therefore I understand that today as a state we stand at crossroads गोटे पटे आमर एक प्रकार जर्नी रही एक प्रकार मूवमेंट रही जोठी आमे वी हैव ट्रांजिशन फ्रॉम अ फेज जतबे ओडिसा को कनेक्ट कराउतला पॉवर्टी अमिट्स प्लेंटी रू वी आर टुडे द नंबर 1 स्टेट इन फूड सिक्योरिटी वी हैव कम अ लॉन्ग वे किंतु से समय आई आल्सो अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो and here are some of the points how I would like to envision the Odisha of my dreams in 2036. First of all, I understand that we have a huge demographic dividend. When Odisha reaches 100 years of its existence, we will be an exceptionally young state with a median age of only 30 years. सेतेबेले I think आमे से समय रे आमर फोकस टा ए रहिबा कथा कि आमे आम यूथ को भाबरे आगो को नै कि तांको स्किलिंग तांको रीस्किलिंग एवं अपस्किल करि पारुछे सो दैट से माने लेबर मार्केट रो चेंजिंग डायनामिक्स को देखि कि आगो को जाय कि जॉब मार्केट रे निजर पोजीशन करि पारुछंती and by youth I don't just mean universities रे पढुथिबा youth जो माने education रो benefit नै पारुछंती I also mean the tribal youth I also mean the youth from the disadvantaged section I also mean the youth who is engaged in agrarian labor I also mean the youth who is working in the brick kiln I need to bring all of them together and आमे आगु को जाय कि गोटे inclusive ओडिसा गोटे inclusive strategy रा सह आगु को जिबा एया होछि मोर स्वप्न रो ओडिसा The second thing I would want to talk about is education आम literacy rates बहुत आगु को जाय छी आम drop out rates बहुत खसी छी किंतु I want जतबे आमे ओडिसा 2036 देखुछे आमे देखिबा कि how do we perceive education as a passport to success or as an obligation to serve कारण physical capital गोटे दिन रे बनै देई होई जिवो किंतु moral capital को बहुत समय लागेबो and I think it is time that we build the moral capital for our people right now. On the third important basis I would like to talk about is आमे देखि पारि छी हम हेल्थ केयर सेक्टर रे कोन लैक्यूना रही छी कोन लूपहोल रही छी एंड सेथे पे ए आम पे आगामी दिन रे एह रही परिबो हमर गोटे गोल कि हम हेल्थ केयर सेक्टर को आमे आगो को केमिति नै जिबा ताको केमिति रोबस्ट बनेबा ताको केमिति डिसेंट्रलाइज करबा ताको केमिति प्रत्येकटी रिमोट एरिया जाई भी पहुंचै दे परिबा एटा रहितला मोर थर्ड इंपोर्टेंट पार्ट. And the fourth important thing I would want to talk about is, ame jani che we are presently in a era where we are going to face the future of work in the context of fourth industrial revolution, and AI, machine learning, and science and technology are going to be the drivers of change. A moment re, I think our biggest achievement will be जदि आमे हमर डिजिटल डिवाइड को रिड्यूस कर दे परिबा आमे इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी को इंटरनेट क्वालिटी को आगु को नै कि लोकन को पाखरे पहुंचै दे परिबा एटा रही परिबा हम पई गोटे बिगेस्ट अचीवमेंट बिकॉज़ जदि आमे इंटरनेट को पहुंचै दे पारुछे आमे लोकन को पाखरे पावर आनी दे पारुछे. तापरे the fourth important thing I would like to talk about is the female labor force participation. Our SHG groups have done a wonderful job. I think our foundation has already been built in this regard. किंतु एबे टाइम आसुछि कि आमे ए जिंस को आगे नहीं से माननकु माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बनेबा तांको स्किल्स को आगो को आनेबा ओडिसा रे गोटे जॉब जनरेशन गोटे जॉब क्रिएशन गोटे एंटरप्रेन्योरशिप रो लहर आनी की रखिबा सो दैट हमर समस्ते छात्र छात्री हुंतु द यूथ हुंतु आगो को जाय कि गोटे जॉब क्रिएशन रे गोटे स्टार्टअप कल्चर रे एंगेज हुंतु. किंतु ए सब स्वप्न सह मु एटा बिलीव को चाहेनी कि all of this we have to do in a sustainable way, because काली की we don't want कि our next generation someone like Greta Thunberg comes and says how dare you do this to my environment. So I think we have to do all of this keeping in mind the impacts
of climate change. एमती कहवाक गले तो बहुत गुड़े जिनस अच्छी आई एम श्योर आम स्पीकर्स मैंने बहुत किसी कही थे रिगार्डिंग दिस से कथा अनुसार जमती wherever we want Odisha to be, wherever we wish Odisha to be, I would remind my youth friends here that where Odisha will be depends on you and me. And so this is the effort that you and I have to take. So as they say, the journey of 1,000 miles begins with a single step. So I think it is you and I who have to make this step ahead. मु स्कूल रे उत्कल भारती कुंतला कुमारी सावत को गोटे कविता टी पढ़ी थी वन फूल उद्यान कुसुम से लिखाई कि वन फूलटी बणरे फुटी निजर बास विस्तारिला किंतु केही ताहाकु जानि पारिलेनी। चिंता करिली कि कौन ओडिशा भी से वन फूल परी इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट ही रही जबो। मन भितर दृढ़ शब्द रे आसिला ना। I think it is time we unravel this mystery before the entire world and show to the entire world who Odias really are. Thank you. बंधुगण 2036 स्वर्णिममय होवाई जाऊे एक कथार प्रतिश्रुति आज मंचर मिलूँ सत किंतु दुई भौणी परस्पर निज निजस्व कथा को रखिले एबे एकाठी एका स्वर रे निज मनर कथा को एवं एठारे उपस्थित थिबा प्रत्येकटी नारी शक्तिंकर कथा को रखिया जाउछन्ति। अनुरोध करबी नारी शक्तिर ओडिशा हो, भविष्यतमुखी ओडिशा हो, स्वर्णिम ओडिशा हो, ए प्रतिश्रुति आमे समस्त नबा एवं करताळे दे आज रे समस्त काम को संवर्धित करबा। नमस्कार आज्ञा। ओडिशा माटीर झियो मु ओडिया को नहीं गर्व करे मु कथारे अछि उच्च हवा को कर जेबे आशा उच्च कर आग निज मातृभाषा। मु चाहूँगी ओडिशा माटीर झीए होइतिबारे आमे ग्लोबल ओडिया दरकार हेले इंग्रेजी कहबो किंतु निज ओडिशा भाषार मान मर्यादा आ महत्व को सबु बेले आगे रखिबु। आम पई प्रथमे आमे ओडिया आ जोटिक जिबु आमे निजको गोटे ओडिया बेली गर्वित अनुभव करिबु। मु ओडिशा माटीर झियो मु जुआडे जाए किंतु सबु क्षेत्र रे मु मो ओडिया को प्राधान्य देबी आ ओडिशा को सबले ऊपर रखी आ चेष्टा करी सारा दुनिया रे सारा भारत रे ओडिशार ना सब प्रथम रहू और ओडिया लैंग्वेज सब जय जगत रहो। धन्यवाद धन्यवाद। जेमेति कुहागला कि ए सबु जहाँ भी हमर सब विचार रही कि आमे केमिति ओडिशा को आगु को नहीं जिबा ए सबु सेतेबेले ही हेई परिबो जेतेबेले आमे ओडिशा प्रति निजर आइडेंटिटी प्रति निजर प्राउड ओडिया आइडेंटिटी को नहीं कि आगु को बढ़िबा जेतेबेले आमे जानिबा कि भाषा ही हमर भविष्यत। धन्यवाद। Tell them to flank me. Tell them to be on the stage with me. बंधुगण ओडिशार स्वाभिमान प्रतीक उत्कल गौरव मधुसूदन दास 1903 मसीहा अर्थात आज को 121 वर्ष पूर्वे उत्कल सम्मेलन आह्वान करथिले। मधुसूदन दास को आधुनिक ओडिशार जनक कहले अत्युक्ति हब ना। केवल मधुसूदन दास नुहंती ओडिशा माटी तांको परि बहु महान व्यक्तित्व को जन्म देछि जहाँकर दाद हिसाब रे आम आज निजको धन्य मन कर। बहु बाधा विघ्न बहु अनाटन सत्वे देश पाई जाति पाई उच्च अभिलाष तांका मन रे थिला एवं दूरदृष्टि थिला गोटे आगामी भविष्यतर। दूरदृष्टि बा भविष्यत इंग्राजी भाषा रे कहा जाए विजन एवं एपरी महान व्यक्ति को विजनरी आख्या दिया जाए। विजन शब्दटीर उत्पत्ति लैटिन शब्द विडिएर रु यार अर्थ देखि पारिबार क्षमता किंतु गभीर भाव जदि आपण भाविबे असाधारण दृष्टि शक्ति विजन रो अर्थ होला असाधारण दृष्टि शक्ति जहाँ बुद्धिमता संगे संयोजित। अनेक क्षेत्र रे एपरी विशेष गुणर अधिकारी मानकर अति भौतिक दृष्टि शक्ति थाए जहाँ बल से माने गोटे अनागत भविष्यतर छवि परिष्कार भाव में देखिपारती। अमेरिकन फ्यूचरोलॉजिस्ट जोएल बार्कर कहवा कथा ए विजन बा भविष्यत को देखिपारिबार क्षमता
जेकोसी नेता जेकोसी नेतृपद बाच्य व्यक्तिंकर विशेष भाव में रहिबा दरकार। गोटिए देशर साधारण मनीष को भविष्योन्मुखी करी तोलिबार दायित्व ग्रहण करने को हेब। वर्तमान कथा हेबा एहीपरि लोकंकर चारित्रिक विशेषत्व कौन रहिबा दरकार। उत्कल गौरव मधुसूदन ठारू प्रबाद पुरुष विजयानंद पट्टनायक परी विजनरी व्यक्ति माने सेमानकर प्रथम गुणटी है पुरातन को त्याग करी भविष्य को स्वागत करि परिवार आत्मविश्वास। जहाँ पुरातन ताहा हुए तो आमर बहुत प्रिय, किंतु ताहाकु धरी रखियो को जाई तार बेड़ी श्रृंखल आबद्ध हो गले आमे आगु को बढ़ी पारिबा नाही। एक दिगरे आम इतिहास आमको परिचिति दे थाए, अन्य दिगरे इतिहास दासत्व बंधा पड़गले व्यक्ति हो बा जाति से भविष्यतर यात्री हो पारिबो नाही। स्मृति सर्वस्व व्यक्ति पक्षरे स्वप्न देखिबा संभव नुहे। बोईतटीए नदी पार हवा को गले ताकू आग कूल को छाड़ा हुए, किंतु गोटे जातिर भविष्यत स्वप्न देखिबार प्रयास मन को आनिबा मात्रे आतंकित लगे। भविष्यत नक्साटीर सबुकिछि टिकी निखि जना नथिले आमे आगु को जीवार प्रयास करिबारे विब्रत होई पड़ू। से पथर संपूर्ण विवरणी नाही। जे पथरे जना ठारू अजना अधिक से पथर पथिक हेले अजना विपन्न संकट परिस्थितिर संभावना रही था। भाविबार कथा 1942 मसीह महात्मा गांधी जदि एपरी भावना मन को आनी थांते आज मध्य हुए तो आमे पराधीनतार बेड़ी श्रृंखल आबद्ध रही थांते। महात्मा भारत छाड़ स्लोगान रे एक प्रांजल भविष्यतर स्पष्ट चित्र नथिला, थिला केवल स्वाधीनतार स्वप्न। किंतु प्रश्न उठे वर्तमान वास्तवतार विच्युत होई भविष्यतर बाट चलवा कौन सतरे संभव? एठारे कही रखिबा दरकार पृथ्वी रे दुई रकम मनीष अछंती। अधिकांश मनीष पाद बढ़ाइबा आगु बाट खोजंती। महात्मा गांधी बाट खोजी नथिले, बाट काढ़ी थिले। नूतन मार्ग सृष्टि करी जाति को कहले आस एई बाटरे चलिबा। निज व्यक्तिगत जीवन हेउ बा सामाजिक सत्ता हो, जेबे भी कौन से नूतन स्वप्न आसे आमे त्रस्त हो पड़ू। चारिआड़ को चाह शून्यता देखू। नाही नाही रे हृदय आंदोलित हो उठे। प्रत्येक जिनिस पई धन जन बलर आवश्यकता निश्चय अच्छी, किंतु सेप्रति प्रथम जदि जड़े विह्वलित हो पड़ो ता पक्षर आग को पाद रखा संभव नुहे। उत्कलमणि गोपबंधु दास पारे कौन थिला? पुरीर गोटे मठरू पुराणा छापा मेसीन खंडे किणी सत्यवादी समाज खबर कागज आरंभ करते। भारत रत्न मदर टेरेसा आर्क बिशप ठारू 25 टंका नहीं मिशनरीज ऑफ चैरिटी गढ़ी। से ही मनीषटी ही स्वप्न देखिपारे जी नाही नाही रे नुह, जे अच्छी अच्छी रे विश्वास रखे। किंतु अनुष्ठान जाति गढ़ा को गले केवल स्वप्न देखले हम ना, स्वप्न को संभावना एवं संभावना को साकार करने को पड़ो। आ स्वप्न को साकार करने को गले मनीष जदि विफल हो जाए ताहले कौन हम? कथाटी भाविबा मात्रे विफलतार भय ग्रास करे, मनरे घटी जाए अमावस्यार अंधार। आउ सेई मुहूर्त रे मनीष हारी जाए। तेबे महान जननायक मानकर जीवन कहानी देखिले गोटे जिनिस परिष्कार भाव में फुटी उठे। यही व्यक्ति माने भविष्यतर ब्लूप्रिंट तैयारी कला बेले असफल जे हेई परिबे से संभावना मन को केबे आनी नथिले, से संभावना को मन रे केबे स्थान देई नथिले। जो बढ़ई कोणार्क मंदिर गढ़ी से विफलतार सामान्यतम संभावना को मनरे प्रश्रय दे नथिले। परवर्ती समय रे सागर लहड़ी आसी पत्थर पर पत्थर टाणी नेला, किंतु बिंधाणीर स्वप्न को भांगी पारि नथिला। महानदी नराज घाट बंगोपसागर बक्ष चिरी मास मास पाल भिड़ी आहुला टाणी दिनर खरा और रातिर अंधार भेदी जो ओडिया बणिक जाभा सुमात्रा पारी करूला, से जदि सफलता और विफलतार तर्जमार पड़ जाता आमे आज बालीजात्रार समारोह देखु न था। स्वप्न देखिबार क्षमता हासिल करने को हेले आउ गोटे विशेष गुण को निजर करने को पड़ो। भविष्यत मात्रे अनागत। जनमानसर शब्दकोश अनागत शब्दर अर्थ समय रे अनेक समय रे जहाँ असंभव। समाजर तथाकथित पुरोधा मानू वर्तमान ही अधिक सुहाई थाए। वर्तमान अस्तित्व रे तांकर स्वार्थ निहित।
एइथिपाई जुग जुग धरी नूतन आह्वान करुवा व्यक्ति को समाज बासंद करिवार अनेक उदाहरण रही। हजार हजार वर्ष धरी मानव जातिर धारणा थिला पृथ्वी स्थिर निश्चल एवं सूर्य चंद्र ता चारिपटे घूरी बुलुछंती। गैलीलियो जो दिन कहले पृथ्वी सूर्य को प्रदक्षिण करुछि तांको गभीर समालोचनार शिकार होबाक पड़िथिला। मानव इतिहास रे जेबे भी कौनसी व्यक्ति नूतनतार संदेश आनी देछि ताको अनेक क्षेत्र में मिली उत्पीड़न एवं अत्याचार। लोकप्रियतार उपासक माने दैनंदिन लोकमत बाहर को जाई पारंती नहीं, जीवार साहस न थाए, भविष्यतर स्वप्न देखा को दंभ दरकार। निज पाई भिजनटे गढ़ा एवं देश जाति समाज पाई गोटे सामग्रिक स्वप्न देखा मध्य गोटे विराट बड़ तफात रही। व्यक्तिगत स्वप्नर साफल्यर अधिकारी मु, किंतु सामूहिक स्वप्नर परवर्ती अध्याय रे जदि मो पाई स्थानटीए न रहिबो से विपद मध्य रही पारे। सामूहिक सफलतार जदि व्यक्ति विफलता आसी जाए तेबे स्वप्नटी दुस्वप्न हो जाए। व्यस्त हो पड़ू, अचानक सते कि भूल ट्रेन रे बसी जाइछु। किंतु आमरी भितर उत्कलमणि गोपबंधुकर उदाहरण रही जे देशवासी भविष्य कामना करी कहते मिशु मोर देह ए देश माटी रे, देशवासी चली जातु पिठी रे। अंध कवि भीम भोई कहीगले प्राणीर आरत दुख प्रमित देखु देखु केबा सहु, मो जीवन पछे नरके पड़ी थाऊ जगत उद्धार हो। संकीर्ण स्वार्थ उत्तरजीविता आउ जाति पाई स्वप्न देखा मध्य रही आकाश एवं पाताल पार्थक्य। गोटे राज्य पाई सामूहिक स्वप्न देखा कौन छोट पर्दार विषय वस्तु नुहे, से ही स्वप्नटी यथार्थ जहाँ बड़ पर्दार विस्मयकर एवं सिंहरण जगाउथुवा गोटे स्वप्न। क्रिस्टोफर कलम्बस स्वप्न देखा जाई पथभ्रष्ट होते, बेले बेले पथभ्रष्ट होगा पड़ो। आसी थिले भारतवर्ष खोजा पहुँची गले अमेरिका। भविष्यतर स्वप्न देखा गले सांप्रतिक समाज चेतना को प्रश्नर काठगड़े ठिया करने को पड़ो। से स्वप्न साकार करने को जे समस्ते आपणा छाए आपे आपे चली आसबे ता नुहे। से तो कविगुरु रवींद्रनाथ कहते जदि तोर डाक शुने क्यों ना आसे तबे एकला चलो रे। स्वप्न को साकार करने को गोटे मनीष गोटे पाद आगे आसवा पड़ो। तापर ही साधारण जनमानव आगे आसबे, हाथ धरिबे, अंटा भिड़े आउ से साधारण मनीष बल एक असाधारण भविष्यतर बाट खोलीज। बंधुगण समय आसछि आम गण रे अछंती आम 5T रे अध्यक्ष श्रीजुक्त कार्तिक पांडियान। तांकर मुहरु आमे दीपक शुणिबा तांकर मनरे विजन 2036 कौन कथा रही। श्रीजुक्त कार्तिक पांडियान। थैंक यू सर। जय जगन्नाथ। ए भितर किए स्टूडेंट्स अच्छा टी हाथ उठेले 80%। थैंक यू। किए पीजी स्टूडेंट अच्छा हाथ उठेले, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट 40%। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ओके। स्कूल स्टूडेंट्स के भी नहांती। सो मोस्टली इट इज कॉलेज यूजी और पीजी स्टूडेंट्स। बेसी भूख लगुच कि केते टाइम मते देबे? केते टाइम? लास्ट स्पीकर बिफोर लंच बहुत टफ चैलेंज। मु बहुत कमरे सरदेवी। मो आगु आपण 5टा यस के शुणुंट। सुब्रत, संतृप्त, सच्चिदानंद, स्वप्नेन्दु, समीक्षा, सौम्य। 5टा यस सक्सेस हबार अच्छी यस दरकार ना। डेफिनेटली देखु केमिति स्पीकर सेलेक्ट कर सबु यस। ये भितर गोटे वी कौन करी बोधे भाविबा मुझे निजे को मुझे कोई भी वी इज आल्सो विक्ट्री, वी इज आल्सो सक्सेस। सो 5 S and 1 V आर गोइंग टू आपण मान सागर कथा हबार अच्छी। भल 6टा स्पीकर टा बहुत भल नंबर।
आपण माने किए भी स्पिरिचुअल ये रहती बे नंबर 6 इज ए वेरी गुड नंबर ऑस्पिशियस नंबर सो आमे 2036 रा कथा 6 जनक पाखरु आरंभ करूछु से भितर भी 6 जनक भितर 5 जन सक्सेस और जने टिके विक्ट्री करबा पे चेष्टा करूछंती आधा भी बहुत बहुत धन्यवाद आपण माने जो बड़ी भाबरे कोइले तापरे कोई बात किछि नहीं both the students spoke so well very inspiring बहुत प्रेरणा मिलुछि स्वप्नेंदु जने इंटरनेशनल नुआ वर्ल्ड इकोनॉमी रे ना कमैछंती थैंक्स फॉर कमिंग डॉक्टर पांडा जदि हमें कोई भी दुई वन स्टेप बिफोर द नोबेल प्राइज थैंक्स फॉर कमिंग और बागची सारंगर कथा तो कोई बात दरकार नहीं डॉक्टर संतृप्त has been a flag bearer for Odisha not just nationally but internationally we are very proud that se iti ama sangare ochonti और से दुई जन पिला किए भी कोइले very proud बहुत गर्व लगुची तांकर कथा सुनिकी मु कौन कहबी प्रथम गोटे मु करेक्शन करी आमर टार्गेट आपण माने जानिथिबे भारत सरकार आम माननीय प्रधानमंत्री आरंभ करके समस्त जबे भी टार्गेट कहबे 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस 2047 रे भारत वर्ष कोटी पहुंचबार अछि कौन स्वप्न अछि सेटा करिवार ले कौन कौन करिवार अछि आमर टार्गेट रोची सेतरु 11 वर्ष कम रे 2036 आम ऊपर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी अछि आमे 2047 पर्यंत अपेक्षा करि पारिबु नै आमर टार्गेट 2036 किंतु 2036 हेले आमे केबे भी गोटे प्लानिंग करिबु एटलीस्ट 2 वर्षर बफर दरकार 2 वर्षर बफर दरकार सो आम टार्गेट और कमी जीवो 2034 नॉट 2036 2036 अचीव करिवार अछि ताले 2024 पे हमें प्लान करिवा पड़िबो 2034 पे एबे हमें कोतरे ओछु को ईयर रे ओछु पिला माने जोर रे 2024 रे ओछु सो हाउ मेनी इयर्स वी गॉट नाउ टू 2034 मात्र टिके कोहंतु ताले मु जानिबे आपण माने अलर्ट होचंती और केते वर्ष होची मात्र 10 वर्ष होची ओनली 10 इयर्स एमिति पळैबो 10 वर्ष सो आम टार्गेट के रीडिफाइन करवा पड़ो आम टार्गेट 2036 नहीं 2034 एवं मात्र 10 वर्ष होची भारत वर्ष पे 2047 बहुत टाइम होची किंतु ओडिशा पे बहुत कम टाइम होची आपण माने देखिथिबे सब बेले आमे चेंज कोता कहितिलु एटा के चेंज करिवार अछि एजुकेशन टा के चेंज करिवार अछि हेल्थ रे चेंज करिवार अछि परिवर्तन आनिवार अछि इंफ्रास्ट्रक्चर रे परिवर्तन आनिबार अछि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे परिवर्तन आनिबार अछि हठात गोटे चेंज हैला 2019 परे से चेंज वर्ड टा के रिप्लेस करा गला ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरीकरण गियर चेंज हैला ओडिसा रे गियर चेंज हैला 500 वर्ष रे जो भी काम है नहीं तिला सेटा के 3 वर्ष रे हमें प्रिय मुख्यमंत्री महाप्रभुंकर आशीर्वाद रे पूरी परिक्रमा प्रोजेक्ट करके देखेले हमें जो भी रास्ता रे आसुचु हमर बागची सार रो आरंभ करके समस्त किछि किछि ज्ञान देइचंती से ऊपर मु बेसी पछपक जिबि नै नियर पास्ट रे लेट्स टेक फ्रॉम द न्यू मिलेनियम 2000 आमे को रास्ता रे आसुचु से रास्ता जदि देखिबु ताले आमे कोटी पहुंची पारिबु से ऊपर गोटे आत्मविश्वास आसीबो ओनली सेटा को मु एक्सप्लेन करिबे आपण मानक आज भी आमे एबे सुदा डिफाइन करि पारु नै व्हाट इज ए नुआ ओडिसा कोन और सशक्त ओडिसा कोन आमे जदि आज डिफाइन कर देबु सेटा और 3 वर्ष परे सेटा रिलेवेंट रहिबो नै इट हैज टू बी ए फ्लेक्सिबल टारगेट इट हैज टू बी ए फ्लेक्सिबल टारगेट
कौतरे आपण समस्त कंट्रीब्यूट करिवे वर्ल्ड रे जो भी भल जिनस होची सेटा की इनकलकेट करबा पड़िबो इनकॉर्पोरेट करबा पड़िबो इट हैज टू बी अ डायनामिक प्लान सो आज ही हमें डिफाइन करबा नहीं व्हाट इज नुआ ओडिशा व्हाट इज एम्पावर्ड ओडिशा इट इज अ आइडिया इट इज एन ऑब्जेक्टिव इट इज अ थीम एस्पिरेशनल थीम कोटी हमें पहुंचेबार अछि किंतु रास्ता हमें डिसाइड करबा पड़िबो को रास्ता रे हमें जिबो आपण के एबे जो भी हमें 20-25 वर्ष रास्ता को मु देखेबी ताले आपण जानिबे और कोटी हमें पहुंचेबार अछि किए भावितिले 2000 मसीहा रे 70% लोग गरीब जनसाधारण होचंती ओडिसा रे और 20-22 वर्ष भितरे सेटा 11% के कमीबो कहार मनरे सारा दुनिया रे आम ऊपर एडिटोरियल लिखा गला एते खराब मैनेजमेंट करा गला बोली कि लिखा गला सही समय रे किए भावितिले 2012 मसीहा रे गोटे सुपर साइक्लोन आसीबो से सुपर साइक्लोन रे आमे सबु जीवन को बंचेबू गोटे जीवन भी हरेबा को दबु नहीं एवं न्यूयॉर्क टाइम्स रे फ्रंट पेज एडिटोरियल आसीबो जदी लोकों को बंचेबार अछि नेचुरल कैलामिटी रे ओडिशा बोली के गोटे राज्य होची सेइट्रु सिकिबे न्यूयॉर्क टाइम्स रे फ्रंट पेज आर्टिकल आसीबो ए रास्ता रे हम आसचु 2000 मसीहा रे निज खाद्य सुरक्षा पे हमें पंजाब हरियाणा ऊपर निर्भर करतलु तांका पकरू ट्रेन रे चावल आसिले आम घर घर रे चावल पहुंचीतिला एबे 2017-18 रु एटलिस्ट 5टा राज्य आम ओडिशा रु ट्रेन आसीबो बोली अपेक्षा करछंती एटा होची परिवर्तन रूपांतरीकरण फूड सिक्योरिटी रे कोन प्रभाव पकैछंती आम प्रिय मुख्यमंत्री वी आर द थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर फॉर फूड सिक्योरिटी 2000 मसीहा रे हमें कोटी तिलु एबे हमें कोटी होचु हेल्थ मु तो कोई भी नहीं 2000 मसीहा रे हमें कोटी तिलु हेल्थ रे कोई बा भल हबो नहीं किंतु आज ही जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी रु आरंभ करिकी स्टैनफोर्ड ये सब यूनिवर्सिटी रे रिसर्च करछंती ओडिशा वाली गोटे राज्य कोविड महामारी की केमिति मुकाबला कले को द्वारा सारा भारत वर्ष रे फैटालिटी रेट सबुटु कम तिला ओडिशा रे सबुटु अधिक लोग बंचेबारे सक्षम हल्ले ओडिशा 22टा राज्य को हमें ऑक्सीजन पटे पारिलु प्रतिदिन 40,000 लोक मानकर जीवन बंचेबारे ओडिशा रो भूमिका तिला सारा भारत वर्ष रे 40,000 लोग ओडिशा रो ऑक्सीजन आसिले कोविड टाइम रे बंचितिले 2000 रे आपण कोटी तिले 2000 कोडिया रे आपण कोटी पहुंचले कोविड टाइम रे हमें डॉक्टर सरप्लस हेबा को जाउचू सबु बेले हमें कहतलु डॉक्टर अभाव और वर्ष भितर हमें डॉक्टर सरप्लस हेबा पे जाउचू रेवेन्यू सरप्लस फूड सरप्लस डॉक्टर सरप्लस स्वप्न ओलिया लगुची ओडिशा पे किंतु स्वप्नटा आज साकार हेछि एही रास्ता रे हमें आसचू एसीबी मेडिकल कॉलेज आपण देखिबे और वर्ष भितर it will be one of the best in the country perhaps one of the best in the world ओडिशा रे talented डॉक्टर अंगरा कम नहीं हमारा डॉक्टर रमाकांत पांडा is the best heart surgeon in the country डॉक्टर सुब्रतो आचार्य is the best gastroenterologist in the country हमारा शंकर आचार्य is known for spinal surgery in the country और बहुत लोग होचंती हमारा डॉक्टर माने आसीबे ओडिशा रे काम करिवे जदी हमें इकोसिस्टम क्रिएट करिबो एटी मेडिकल टूरिज्म हबो आम लोग बाहर के जिबे नहीं बाहर लोग एटी आसीबे एटी ट्रीटमेंट करिवे एटा होची नुवा ओडिशा एजुकेशन को राज्य तांकर सब हाई स्कूल के 2 वर्ष भितरे रूपांतरीकरण करुची 5T जोरिया रे सब ब्लैक बोर्ड को बदली करिकी स्मार्ट बोर्ड लगाए जदि आम पिला माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखिबार अछि ब्लॉकचेन रे अनुभूति नबार अछि ताले हाई स्कूल लेवल रे आमे स्मार्ट क्लास इंट्रोड्यूस करिबो और कौन सी राज्य करुणांती ओनली ओडिशा करुची ओडिशा रे तिबा 8,640 स्कूल को
मान्यवर मुख्यमंत्री रूपांतरीकरण करछंती हाई स्कूल सबुर रूपांतरीकरण हे सारिछि और 3 मास भितर कॉलेज एवं हायर सेकेंडरी स्कूल र मध्य रूपांतरीकरण हबो आपण बाबंतु व्हाट काइंड ऑफ एक्सेस डिजिटल एक्सेस the children of Odisha will have. There will be a leap, there will be a huge jump. The kind of human resources we will be creating, qualitative and quantitative means. ये सब स्वप्न भलिया लगिबो हमके ओडिशा गोटे चासी ऊपर निर्भर करिबा राज्य आमे सब कुछ काम करूचु चासी भी काम करिबार अछि 2000 मसीह रे हमारा इरिगेशन फैसिलिटी तिला 33 लाख एकर्स नेक्स्ट 12 वर्ष रे 10-12 वर्ष रे आमे 10 लाख एकर ऐड करलु नेक्स्ट 10 लाख एकर ऑर्डर करलु 6 वर्ष रे नेक्स्ट 10 लाख एकर ऑर्डर करलु 3 वर्ष रे एटा होची स्पीड ऑफ ग्रोथ इन ओडिशा स्पीड ऑफ ग्रोथ इन इरिगेशन आपणकर 33 लाख एकर्स आज 65 लाख एकर्स रे पहुंची फर्स्ट 10 लाख एकर पे हमको 12 वर्ष लगिला सेकंड 10 लाख एकर पे हमको 6 वर्ष लगिला एबे हमें 3-3.5 वर्ष रे नेक्स्ट 10 लाख एकर रे पहुंचबो आपण बाबंतु कोन प्रभाव पकइबो ओडिशा रा चासी बाई बौणी मानकर आर्थिक सशक्तकरण रे कोन प्रभाव पकइबो ए जलसेचन व्यवस्था आपण माने जानी की खुशी हेबे ओडिशा केबे 2000 मसीह रे आमे इन्वेस्टमेंट पाइबारे सबुटु तळ राज्य रे थिलु सबुटु तळ राज्य रे के भाबितिबे के स्वप्न रे करतिबे ओडिशा इन्वेस्टमेंट आनिबारे 2 नंबर रे पहुंचबो 2 नंबर रे आम ऊपर ओनली महाराष्ट्र होची आजिका दिन रे दिस इज ऑफिशियल ऑथेंटिक डाटा मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट रे आमे 2 नंबर रे होचु वी आर गेटिंग वन ऑफ द बिगेस्ट स्टील प्लांट इन द वर्ल्ड ArcelorMittal Nippon we are getting one of the green steel plants in the world JSW आमे भारत वर्षर सबुटु फर्स्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट आणुछु ACME Japan collaboration रे we are the first state to sign with JSW for electronic vehicle manufacturing वेल्सपन बोली के आपण माने गोटे कंपनी जहाँ सुनिथिबे जदि अमेरिका रे 3टा टवल बिक्री होउची टर्किश टवल 3टा रे गोटे टवल वेल्सपन कंपनी करूची एटा गुजरात रे होची गुजरात रे तिला सेम फुल सेटअप रे एटी 14 कटक आछंती वेल्सपन 10,000 20,000 25,000 पिला मानकर रोजगार पाइबे दिस इज द स्केल इन विच वी आर डूइंग इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट के आपण देखिबे अनएम्प्लॉयमेंट रेट रे सारा भारत वर्ष रे सबुटु तळरे होची ओडिशा एटा आमे कहू नहीं भारत सरकार अनएम्प्लॉयमेंट रेट मॉनिटरिंग एजेंसी तांकर डाटा रे कहूची दिस इज द किए भाबितिबे ओडिशा विल हैव द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट किए भाबितिबे ओडिशा विल हैव द हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट किए भाबितिबे 2-3 वर्ष रे द टॉप 5 बोली के कुवंती आईटी रे एक्सेंचर कॉग्निजेंट डेलाइट आईबीएम सबु आसीबो ओडिशा के दे विल हैव एड्रेस इन ओडिशा किए भाबितिले समस्त मेट्रो को जाइतिले मेट्रो परे और नेक्स्ट लेवल ऑफ मेट्रो को जाइतिले पुणे जाइतिले हैदराबाद जाइतिले बट नाउ ओडिशा हैज मेड एन आइडेंटिटी दैट वी आर ए ग्रीन आईटी कैपिटल दैट्स न्यू ओडिशा ये सब हमें कलु मु भूली गली और गोटे भल जिनस कहवाक आपण माने गूगल करके देखी पारिबे 2000 मसीह रे निजे एम्प्लॉय मानक पे दरमा दबा पे हमको टंका नहीं तिला तो 6 मास लगी 3 मास लगी दरमा दबा पे लोन रे बुड़ी जाइतिला ओडिशा डेवलपमेंट स्कीम करिवा कोता तो छाड़ दियंतु चांस नहीं तिला आज ही ओडिशा वची रेवेन्यू सरप्लस रे सारा भारत वर्ष रे 1 नंबर सारा भारत वर्ष रे 1 नंबर ओडिशा our revenue surplus
has surpassed every other state. Our debt ratio, munda picha loan, kammi ke aschi, we are one of the lowest states to have debt per capita debt ratio. स्वप्न भलिया लगी 2000 मसीह कौ राज्य सबुठु तले थिला खाइबारे स्वास्थ्य रे इंफ्रास्ट्रक्चर रे इन्वेस्टमेंट रे जस्ट 20 वर्ष 22 वर्ष भितर कोटी पहुंची गला ओडिशा और ये सब माइलस्टोन सब हमें क्रॉस करके आसिलु वी डिडंट कॉम्प्रोमाइज ऑन सम थिंग्स कौन कौन हमें कॉम्प्रोमाइज करू नहीं सेटा भी आपण मानन को कोई भी ओडिशा रे जदि आपण एते डेवलपमेंट करिबे एते इंडस्ट्री आनिबे एते इन्वेस्टमेंट आनिबे एते प्रकार चेंज आनिबे इरिगेशन करिबे ताले आपणकर फर्स्ट इंपैक्ट पड़िबो फॉरेस्ट कवर उपरे फॉरेस्ट कवर कोन हला ओडिशा रे the only state or one of the 3 states कोतरे फॉरेस्ट कवर अधिका अधिका है कि चलुची फॉरेस्ट कवर इन ओडिशा is increasing every year हमें ये सब काम करिबा बेले जो भी वल्नरेबल सेक्शन बोली कि कुआ जाए सोसाइटी रे whether it is tribals whether it is women whether it is regional imbalance ये 3 टाका में आकीरे रखी की आगे अस्चू this entire development when development has happened transformation has happened taking and empowering the tribal people of Odisha, the most vulnerable people of Odisha, and women empowerment तो मु कोई बात दरकार नहीं महिला सशक्तिकरण रे ओडिशा आजी 1 नंबर रे अछि 50% महिला मानक राजनीतिक सशक्तिकरण करिबा पे माननीय मुख्यमंत्री रिजर्वेशन दैछंती 50% रिजर्वेशन दैछंती one of the few states who have done it मिशन शक्ति जोरिया रे मां मानक सशक्त करिबा रे आपण माने जानी की खुशी हेबे गत वर्ष मिशन शक्ति रे मां माने 12,000 कोटी टंका लोन नहीं चंती 12,000 कोटी टंका गोटे वर्ष रे मु जानिबा पाइली एई वर्ष 15,000 कोटी टंका लोन नेबे जदि ये 15,000 कोटी टंका लोन नेबे ताले बाबंतु तांका परिवार रे कोन प्रभाव पकैबो तांकर गां रे कोन प्रभाव पकैबो आगुरु ये सब समस्त महाजन पकरे जाई की लोन नहीं तिले सुना भी कितिले जमी भी कितिले आजी बैंक रे जाई की 0% रे जदि 15,000 कोटी टंका गोटे वर्ष रे लोन नेबे सी द इंपैक्ट इट विल हैव ऑन द वुमन ऑफ द स्टेट ये सब करिबा बेले मान्यवर मुख्यमंत्री ये सब करिबा बेले आपण को शॉर्टकट नेबा को पड़िबो कि ट्रांसपेरेंसी रे कॉम्प्रोमाइज करिबा को पड़िबो कि सेटा भी कल्ले ने हम प्रिय मुख्यमंत्री when he did this transformation he ensured transparency in every breadth of Odisha every length and breadth of Odisha से transparency टाके enforce कर ले आमा राज्यो हमें गर्वित तो आपण कोटी भी जाए कि बुझिबे से माने इंडस्ट्रियलिस्ट हुंतु कॉन्ट्रैक्टर हुंतु सर्विस प्रोवाइडर हुंतु समस्त कुहंती आपण को ओडिशा रे जाई कि ओडिशा रे इन्वेस्टमेंट करिबा इसी ओडिशा रे जाई कि बिजनेस करिबा इसी सर्विस प्रोवाइड करिबा इसी कहीं कि देयर इज ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस स्वच्छता ये सब करिबा बेले स्वच्छता को कॉम्प्रोमाइज करू नहीं आम सरकार आम प्रिय मुख्यमंत्री और कौन इंपोर्टेंट जदि आम ये सब करिबा बेले आपण लोकंकर सम्मान भी रखिबार अछि फाइनली वी ऑल वर्क फॉर द पीपल मान्यवर मुख्यमंत्री ये सब करिबा बेले भी मो सरकार के इंट्रोड्यूस कर ले कौतरे लोक मानक सम्मान को गुरुत्व देले आपण जो भी सरकारी कार्यालय की जिबे जो भी सरकारी सर्विस नेबे आपण मानक पकरु फीडबैक निया जिवो दिस फीडबैक सिस्टम टेकिंग फ्रॉम पीपल ऑफ ओडिशा सिटीजन्स ऑफ ओडिशा is something which is very unique and this is to restore or provide dignity for the citizens of the state और कौन सी राज्य करुणा अंति ओनली आम प्रिय मुख्यमंत्री ओडिशा करुची एटा के ये सब करिबा बेले आमे आम स्पिरिचुअल गवर्नेंस को भी कॉम्प्रोमाइज करू नहीं आमे जदि कोई बार अच्छी ओडिशा रे
Odisha has done spiritual governance. It's not bureaucratic governance. It is not political governance. माननीय मुख्यमंत्री has done a spiritual governance. यदि ये spiritual governance नहीं, ताले इतने बड़ा संख्या रे परिवर्तन, इतने बड़ा संख्या रे transformation, हमारा scope ही नहीं. Spiritual governance, I mean, not just secular governance. Spiritual governance, I mean, it's guided by spiritual values, swachhata, namrata, भगवान ऊपर विश्वास करिकी, महाप्रभुंकर विश्वास करिकी, सबु काम रे तांकु सामने रखिकी, ओडिशा वासिंग का आगे नबारे सक्यम हेचंती आम प्रिय मुख्यमंत्री. This is the road which we have traveled so far in 24 years. एबे next 10-year road map. जदि ये रास्ता में जो भी क्रॉस करिके आसुचु, ये रास्ता का अपन देखिबे, हमारा आत्मविश्वास बढ़िबो, आमे करी पारिबु. आपण माने कोई बार अछि, हमके 10 वर्ष दरकार नहीं, 5 वर्ष रे करीबार अछि. This 24 to 29 is going to be a game-changing year, game-changing tenure for the state of Odisha. 29 to 24 जो भी speed रे चलितिला, now 24 to 29 will be much faster, much bigger, much inclusive, much green and much empowering. Odisha will not compete with other states now. Odisha will compete with the world. Our targets are different. महाप्रभुंकर आशीर्वाद रे आपण समस्तंकर सहयोग रे आशा करिबा सेटा हबा के जाउची. मु और कोई भी नहीं, पिला माने बहुत व्यस्त हे गले, भूख लगी गला, मु एतरे सारी जाउची. I would like to hear all the speakers' speeches. कहार भी मु मिस करूची. And Honorable CM will be interested to listen to all your speeches. I assure you that we will put your speeches to the Honorable Chief Minister. आपण मानक भितर including Soumya and Samikya, आपण मानकर जो भी सजेशन होची, सबु सजेशन के आम प्रिय मुख्यमंत्री गुरुत्व सह नब्बे आमे समस्त मिसिकी 2034 टार्गेट तक सेट करिबा और को रास्ता रे आमे जिबु से रास्ता के भी आमे बाटा बाहर करिबा. जय जगन्नाथ. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. अनेक अनेक धन्यवाद महोदय. नुआ ओडिशा, रूपांतरित ओडिशा, नूतन ओडिशार मुख्य सारथी 5T माध्यम रे ओडिशार शासन और रूपांतरीकरण करने को दृढ़ संकल्प नहीं. आम पुनर्बार स्वागत करूँ निज हृदयर गभीरतम कोणरू निजर आंदोलन भरा करताली माध्यम टे जोरदार ताली बाजिबा दरकार. समय वर्तमान संबर्धना पर्वर अनुरोध करने चाहबू माननीय 5T अध्यक्ष महोदय को. महोदय वर्तमान श्रीयुक्त सुब्रत बागची महोदय को सम्मानित करेंगे, संबर्धना बाढ़े. उपढकन मोमेंट दे संबर्धित कराଯାଉଛି. आज ही प्रथम विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन 2024 शेष दिवस रे अनुरोध करने चाहबू ओडिशा 2036 रे आपण मैंने समस्त अंशीधारिता करी ए मुहूर्त को आउटे बेसी स्वर्णिम करछन्ते. परे परे अनुरोध करने चाहबू महोदय वर्तमान डॉक्टर संतृप्त मिश्र महोदय को संबर्धित करेंगे. माननीय 5T अध्यक्ष महोदय आपण मान सम्मुख में स्वहस्त सम्मानित कर सम्मान गुड़ी को बाढ़ुंट राज्य तरफ राज्य सरकार तरफ जोरदार ताली बाजिबा दरकार समस्त हाथ. अनुरोध करने चाहबू माननीय 5T अध्यक्ष महोदय को. महोदय वर्तमान श्रीयुक्त स्वप्नेन्दु महांती महोदय को संबर्धित करेंगे. करतालीर अभाव घटुची. सम्मान मंच रे उपढकन एवं मानपत्र दे करा जाउची. आपण मान करतालीरू ए मुहूर्त आउ टिके बेसी स्वतंत्र हो जिवो. आपणकर प्रत्येकटी कथा, आपणकर प्रत्येकटी वार्ता पाई आमे गर्वित, आमे प्रशंसित. धन्यवाद देवाई चाहबू श्रीयुक्त सच्चिदानंद पंडा महोदयंकर प्रत्येकटी अभिभाषण पाई. अनुरोध करने चाहबू माननीय 5T अध्यक्ष महोदय सुवार्ता पाई तांकू आज ये मंच रे सम्मानित करेंगे, तांको संबर्धित करेंगे. आम विश्वास नोबेल पुरस्कार पाई आपणकर प्रत्येकटी दायित्व समाज कल्याण हितर लगे, भविष्यतर कल्याण हितर लगे. अनुरोध करने चाहबू करताली माध्यम आम संबर्धित करूँ. वर्तमान
जो दुई जन विद्यार्थी ए मंच निजर शब्द को रखते सम्मानित कर समय सर्वप्रथमे आम समीक्षा त्रिपाठी को ए मंच उपढौकन एवं मानपत्र दे सम्मानित करचु परे परे सौम्य पट्टनायक को ए मंच सम्मानित कर सांगे अच्छा सौम्य पट्टनायक मानवर 5टी अध्यक्ष महोदय हाथ ए सम्मान को ग्रहण कर चमत्कार परिवेश अद्भुत आडंबर ए मुहूर्त अनुरोध करने चाहबू करताली अभाव न घटू वर्तमान अनुरोध करने चाहबू समस्त उदाहरण तथा आज समीक्षक तथा आज टोटाल कार्यक्रम जी निजे संयोजक साजिते अध्यक्षता करते अनुरोध करूँ डॉक्टर सुब्रत बागची महोदय को महोदय वर्तमान 5टी अध्यक्षकों को यह मंच सम्मानित करेंगे संबर्धित करेंगे ये आज्ञा सम्मान तदूर्धरे कहीपर ये एक प्रकार भल पाइबा एक विश्वास ओडिशा को नहीं विश्व ओडिशा भाषा सम्मेलन 2024 पर्व को नहीं एवं आज कार्यक्रम ओडिशा 2036 नवदिगंतर संभावना को नहीं धन्यवाद ज्ञापन करने चाहबू प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव में जड़ित रही प्रत्येकटी अधिकारी गणकर उच्च पदस्थ अधिकारी गणकर एवं मंचासीन अतिथि गणकर आपण मानकर उपस्थिति आपण मानकर सहयोग आपण मानकर प्रत्येकटी शब्द रुद्धिमंत करछि अलंकृत करछि एवं आज इस समर्थ को आउ टिके बेसी रुद्धिमंत करछि अनुरोध करने चाहबू समय वर्तमान चित्र उत्तोलनर ये मुहूर्त समस्त मुखरे खुशी आनंद उल्लास एवं एतिकी कही आज यह कार्यक्रम को यही समापन करने सह राज्य सरकार एवं उपस्थित प्रत्येक को धन्यवाद ज्ञापन करने चाहबू धन्यवाद ज्ञापन करने चाहबू गणमाध्यम प्रत्येकटी अधीक्षक प्रत्येकटी अधिकारी धन्यवाद देवाई चाहबू परोक्ष और प्रत्यक्ष भाव में जड़ित थी प्रत्येक जो मैंने मंच को साफल्य मंडित कर आज यही समस्त कार्यक्रम को आगक नबार निजर सहयोग को स्थापन करती कही मु शुभम धन्यवाद दूची आपण समस्त को धन्यवाद वंदे उत्कल जननी जय जगन्नाथ।